Yo, what's up, guys? MonkeyGod is back with Assassin's Creed Odyssey. And सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. कल नहीं आ पाया. कल मेरा एक्चुअली इंटरनेट क्रैश हो गया, पता नहीं कैसे. गॉड नोज. सो लेट्स स्टार्ट दिस गेम. एंड मैंने थोड़ा सा अभी जो बोलते हैं ना रेकी करना, मैंने भाई गेम में ऐसी पूरी की पूरी रेकी करके रखी है एरियाज़ की. यू गाइज माइट बी एबल टू सी. मैंने इतने सारी एरियाज़ में पता नहीं मैं घूम घूम के ऐसे ही जाकर आ गया. एंड आई जस्ट अनलॉक्ड दिस स्पेसेस. यहाँ मुझे अभी इजीली फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ. बहुत सारी जगह मेरे पास खुद के पास एक्सेसिबल है अभी. द डंस कॉन्ड्रम लेवल 18 ये नहीं जाना चाहिए. ये आचा एरिया इज़ आउट ऑफ आर लिमिट्स. तो थोड़े मिशंस करके फ़िलहाल मैं अभी 15 लेवल तक पहुँच चुका हूँ. मेरे पास मैंने शिप्स की जो अपग्रेड्स है वो भी काफ़ी कर ली है अपने हिसाब से. वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम. तो अभी अपन जा रहे हैं भाई वुल्फ ऑफ स्पार्टा को मिलने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अपन ने बाकी सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर दिया है. तो लेट अस गो एंड मीट वुल्फ ऑफ स्पार्टा और आगे अपना मिशन जो है वो चालू करते हैं. क्योंकि पहले से अपग्रेड्स अगर अच्छे से हो जाए, ये गेम इतनी लिबर्टी देती है दैट यू कैन एक्चुअली हैव योर अपग्रेड्स वे बिफोर. लेकिन एक ही चीज़ होती रहेगी दैट एज यू प्रोग्रेस आपका लेवल भी उतना ही बढ़ता रहेगा. सो राइट नाउ आई एम हैविंग दिस सेट ऑफ आर्मर्स. अभी ये सब पता नहीं कैसे ऐसे ढोलक जैसे आर्मर है, तो ये चल जाएगा बिकॉज दिस इज़ 14 लेवल. मेरे पास कौन सा था, मैं 15 लेवल का हूँ अभी फ़िलहाल. तो 12 लेवल का ये आर्मर है. पर्शियन हेड. मर्सिनरीज भी बहुत सारे मारे, पता नहीं मैं घूमते घूमते अभी मैं 15 लेवल पे खुद आ चुका हूँ. ऐसे ही मस्ती में लोगों को टपकाया जा रहा था. एंड देन व्हाट डू आई हैव नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली मेरी बोज वगैरह है. बैंडेड बो विल बी अ गुड. फायर डैमेज देगा एक्स्ट्रा. दैट्स ग्रेट. फिर ये एजियो की स्वॉर्ड जो है वो है. देन दिस इज़ व्हाट. ओके सेकेंड हैंड. और सेकेंड हैंड में क्या रखूँ मैं? शॉर्ट स्वॉर्ड. अपना स्पेयर तो अपने हाथ में रहता है ना. देन व्हाई डू वी नीड दिस? मैनू समझ नहीं आ रहा. ओके ये सारी चीज़ें जो है सुपीरियर शील्ड, देन अ मिस्टीरियस लेटर, ये गीकीज ब्रेसलेट इज़ ऑल क्वेस्ट आइटम्स. जब ये आगे चलने के बाद अपने क्वेस्ट अनलॉक होंगी तो अपने को कोई जाने की वापस ज़रूरत नहीं है. इसलिए मैंने बहुत सारी जो एरियाज़ है, यू माइट बी एबल टू सी दिस इन द मैप, ये सारे के सारे बैंडिट का एमपीए वो सारा कुछ जो लेवल में बन पा रहा था मैंने उतना कर दिया है. सो दैट अपने को ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. मिशंस अगर हुए, हाँ मैंने फोर्ट्स टच नहीं किए क्योंकि ये लीडर हाउस मारने से पूरा का पूरा एरिया जो है उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ती है. एंड दैट मेक्स थिंग्स डिफरेंट. सो लेट्स कंटिन्यू. लेट्स गो इनटू दिस जर्नी. ये आइल ऑफ थीव्स पे जो दिखा रहा है ये गोल्डन कलर का क्वेश्चन मार्क इज़ समथिंग विच इज़ एपिक. यहाँ पे एपिक एनिमल भी था. ये रहा वो आर्टेमिस, डॉटर ऑफ आर्टेमिस का जो मिशन है वो भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट इनटू द मेन मिशन. चलो जाते. Welcome back, Commander. Okay, so where are we heading now? I just want to track the mission first. मेरे ख्याल से मुझे मिशन पहले ट्रैक कर लेना चाहिए. Correct. So let's go to the quest. All many Odyssey is the main journey into the war. Destroy 3 Athenian blockade ships. अरे क्या मतलब, तुम बहुत छोटी चीज़ बोल रहे हो मुझे करने के लिए. एक्चुअली अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, अगर नोटिस किया है तो ठीक है, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ दैट अभी मेरे पास जो ये शिप के कैप्टन्स वगैरह जो होते हैं वो बायक है. ये लिeutenant लेजेंडरी लिeutenant है. दैट गिव्स 6+6 रोवर स्टैमिना, 8+8 फायर पावर व्हेन रैमिंग, 10+ रोवर स्टैमिना रिफिल व्हेन क्लीविंग. आया है. हेल्थ रिकवरी देती है, एन आर्मर देती है. एंड दिस इज़ ईवी ऑब्वियसली. फायर जैवलिन डैमेज. तो मतलब यही तो चीज़ अपने को जो था वो चाहिए था. लेट देम. कभी कभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से गाते हैं तो भाई वो दिमाग में आ जाता है मेरे. एंड इट इज़ भाई थोड़ा बहुत मैंने ये भी चेक किया कि भाई वो जो मेरा GPU का यूजेज था वो क्यों इतना सारा ले रहा था भाई. सो दीज गेम्स आर डैम हेवी आई वुड से. ये गेम्स बहुत ज़्यादा हेवी है. एंड
अगर नहीं हो रहा है तो देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड वर्टिकल सिंक, अगर सबको पता होगा, वी सिंक। तो मैंने वी सिंक जो है अपना ऑन रखा हुआ है। हाँ मतलब ये बीस्ट की जो बात कर रहा है, दिस इज़ आइल ऑफ थीसवी। इफ़ यू कैन जस्ट गो इन एंड चेक इट आउट। करना है तो ये खाली लोकेशन जो है खाली अनलॉक हो जाएगी अपने लिए। बाकी मैं खुद भी वही सोच रहा था कि ये गेम इतनी बढ़िया है, मतलब इतनी पुरानी है, सो इट शुडंट लैग और इट शुडंट शो एनी सॉर्ट ऑफ साइंस विच आर लाइक टेकिंग लॉट ऑफ जीपी यूजेज। तो थोड़ा बहुत आई थिंक अभी मैंने सेटअप करके रखा है, तो अभी कितना मैंने रखा है मुझे खुद को याद नहीं है। आई हैव केप्ट ग्राफिक्स ऑन हाई लेवल। हाँ मतलब अभी मैंने हाई करके रखा हुआ है इसको। पता नहीं मुझे डर लग रहा है अल्ट्रा हाई पे डालने के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या करना चाहिए, फॉग कट कर दो पूरा का पूरा, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स हटा दो, एंड देन आई हैव केप्ट दिस थिंग, कहाँ गया वो, डिस्प्ले में आता है ना, रिफ्रेश। हाँ वी सिंक ऑन रखा हुआ है, मतलब ये जो परफॉर्मेंस है वो ये करता है। और दूसरी बात, FPS लिमिटेशंस डाल दो, क्योंकि ये गेम बहुत हैवी है, तो 90 या 60 जितना तुम्हारा PC देता है उतना डाल दिया करो। कभी कभी उसमें भी बहुत ज़्यादा ले लेता है वो, एंड उससे क्या होता है, तुम्हारा CPU जो है वो भी खींचता है और GPU भी खींच जाता है, तो इट इज़ बेटर टू। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा दूसरा वेपन कहाँ से था। दो वेपन्स रखे तो हुए हैं मैंने, लेकिन उसको स्विच कैसे करते हैं अपन। ये ग्रीन कलर का साइन क्या आ रहा है उसके ऊपर। लूट ट्रेजर्स, केव ऑफ द फॉरगॉटन आइल एंड 144 पे एक जो है। ओके ये तो बाद में करेंगे, ट्रेजर्स का कोई लेना देना नहीं है अभी फ़िलहाल। अपने को एथेनियन ब्लॉकेड भी तोड़ना है। लेट अस गो देयर। यार ये तो मैं इसलिए बता रहा था कि वी सिंक ऑन कर लो भाई, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही हो ऐसे। अगर समझो तुम्हारा CPU या GPU कुछ बहुत ज़्यादा खा रहा हो तो, और अच्छा ग्राफिक कार्ड हो तो, मतलब अगर ग्राफिक कार्ड तुम्हारा पीछे के वर्जन वाला है तो वन ट्राई करना, तो ऑब्वियसली ग्राफिक रिड्यूस कर देना, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। बट अभी फ़िलहाल में वो GPU का यूजेज एकदम से 60% ले रहा है, तो अभी ये वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, एंड देन आई ट्राई कि मैं अल्ट्रा हाई पे गेम रन कर सकूँ वापस। वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड्स की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट सी अप इन द स्काई। वैसे तुम पानी के ग्राफिक्स भी हटा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये खाली डेप्थ लाता है। सो व्हेनेवर यू एंटर द वाटर तो। अरे ये बाइक किधर गया, ये देखो ये EV खड़ी है स्पीयर वियर लेके। बाइक देखो कालिया, उसकी बीवी किधर गया आया। ये बारनाबास तो बेचारा भीख मंगे है अपना। लेकिन अभी इतना मैंने शिप को अपग्रेड करके रखा हुआ है कि मैं आराम से जाके इनकी फोड़ सकता हूँ मैं। Increase speed! Come on! Archers, take your marks! Fire! Ready for battle! Face now! भाई क्या फोड़ा है, मतलब यही मैटर होता है लेवल्स का इसमें। लाइक यू आर 15 लेवल एंड दैट दोज गाइज आर 6 लेवल्स, मतलब उनकी तो बैंड बजनी ही थी भाई। Spartans are preparing for a violent push to rid the region of Athenians. Stop that! You hear? Forward! We've reached full speed! We can't go any faster, Commander! एक्चुअली मैं चाहता था मेगारिस में घुस सकता था, पता है, लेकिन मैं मेगारिस में गया नहीं, क्योंकि मेगारिस में ऐसा है स्टार्टिंग में वी नीड टू डू सम एरेंड्स, तो फालतू का मेगारिस में घुस के कोई पॉइंट ही नहीं था। सो आई वाज जस्ट गोइंग अराउंड कहीं पे जा रहा था, घूम के वापस आ रहा था, क्योंकि मेगारिस में बहुत सारी चीज़ें करनी है बिफोर मीटिंग वुल्फ ऑफ स्पार्टा। ऑब्वियसली वी नीड टू रन सम एरेंड्स। Increase speed!
देखो पहले से थोड़ा बहुत अगर करना है ना तो तुम आराम से कर सकते हो. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. चलो एट लास्ट अभी अच्छा है कि ये वाली हेल्प मुझे मिल गई. दैट इट इज़ नॉट टेकिंग सो मच ऑफ GPU यूजेज राइट नाउ. लोडिंग स्क्रीन में मुझे पता नहीं है थोड़ा टाइम ले रहा है बट फाइन. This is Sparta! The wolf takes no prisoners! Wolf is here. See, the Athenian dog Pericles fears you. He cowers in his Parthenon, surrounded by playwrights and sophists. He dares not face you with honor on the battlefield. He knows you are too strong. He knows Athens' days in Margolis are numbered. And he knows Athens is next! क्या स्पीच था सर, मजा आ गया. देख रही है लड़की, बोल रही मेरा बाप किधर है. You destroyed the Athenian blockade. जी सर. They were in my way. Sparta owes you thanks. Diki has blessed you, my friend. Diki. You arrived in time to watch my pater achieve a glorious victory. पातेर. You can't be his son. I heard his children died in Sparta many years ago. He adopted me into his household after his previous family failed him. I would never bring dishonor to him. Sometimes things happen in a way that you don't plan or expect. History has a way of remembering things strangely. You talk as if you were there. Maybe I was. Nonsense. You're too young to have witnessed such things. But enough of the past, let's discuss the future. What is a mercenary doing sailing into a war they aren't being paid to fight in? Tell me why you're really here before I cut you down for wasting my time. I've come to meet the Wolf of Sparta. हंसी बड़ी महंगी पड़ेगी You बंदे cannot को. simply meet with Nikolaos. He कुतरिया. has command of the entire Spartan army. If you truly came all this way to meet him, you might be disappointed. Are you sure you're in charge here? You don't strike me as a typical Spartan. Perhaps it's best if I just talk with Nikolaos. A sense of humor is not a trait I see being useful for a sellsword. If you're here to earn drachmi, though, I could make use of a capable mercenary. The fleet might be destroyed, but Megaris is firmly in Athenian control. We need to weaken their position if we are to take to the field and drive them back to Athens. Okay. How goes the war effort? The Athenian blockade was a desperate attempt to stop our advance through Megaris. Now we can prepare to drive them from this region once and for all. Our forward scouts are identifying key targets in preparation for our assault. Under the Wolf's command, we shall be victorious. क्या बात है, मजा आ गया. हो. Your father, who is he exactly? Nikolaos, the Wolf of Sparta. He was impressed with my skill when I was a boy and took me under his wing. He trained me himself and eventually adopted me into his house. He is my father and mentor. I live to make him proud. Surely you've heard of him. हाँ. Rumors, really. सुना I है. doubt they do him justice. He is a great warrior and a greater general. I would follow him to the gates of the underworld. तो जा अभी से. Why do you need a mercenary to do that? You seem to have plenty of soldiers at your disposal. It's not a question of manpower. The Megarians are our allies. We do not want to commit troops until we know victory is assured.
My scouts are already locating key targets that we can hit. चलो I'm ready to serve. Together we will ensure that Sparta is victorious. You're a different kind of Misthios, aren't you? You're just what we need to help deal with that meddling Athenian mercenary. If we can draw the leader out and eliminate him, we will crush the Athenians on the battlefield and drive their forces all the way back to Athens, destroying their supplies, stealing their war chest, and killing their elite troops should leave him vulnerable. Take this and present it to my scouts. If you find them in the field, be sure to check for new information. They might also have need of your skills. Where is the Athenian leader? He is in Megara, hiding behind stone walls and a full garrison of troops. But if you kill his troops, destroy his supplies, and steal his riches, then he'll be open to attack. क्या बात है? What supplies should I destroy? Anything the Athenians need. Look for crates of supplies and weapons. The port of Nicaea in the valley of King Lelech would be a good place to start. It's where their supplies come into the region. King ले ले, This chest you want me to steal. पर मंदिर ले Why ले. is it so important? An army is made of men that need pain. Take away the drachmae, and they lose all the will to die for other men's ambitions. The Athenians keep their treasure well guarded in the fort at the foot of Mount Yerania. I think I know what must be done. Remember, every Athenian soldier you eliminate will also help us achieve victory. And once I've brought the Athenians to their knees for Sparta, I'll get that meeting with Nikolaos. Or you'll be next. Send those Athenian dogs to Hades, Misthios. Do this, and the wolf will personally see to it that you are rewarded. Okay. उसको पता नहीं है. Conquering nations, meet your father Nikolaos, help Stentor conquer Megaris. हाँ ये तो पता ही है अपने को कैसे वीकेंड करना है यार. अभी इसमें भी बताएगा ये. ओके. इफेक्टिव किल पता है मुझे क्या करना है. उनका वॉर सप्लाई बर्न करना है, उनका मेन चेस्ट लूटना है. दैट्स इट. ओके डोडोज. पोर्शन कंट्रोल अभी ये मैंने एक्चुअली देखा नहीं था यहाँ पर. दिस इज़ द मेन थिंग विच यू नीड टू फॉलो. नहीं, ब्लाइंड किंग, प्रिंस ऑफ पर्शिया. हाँ बताइए क्या है. A journey into the war. If I want to get close to the wolf, I'll have to help Stentor defeat the Athenians. I shouldn't waste any time. एक मिनट, मेरा ये ऑडियो मुझे क्यों कम सुनाई दे रहा है. Have I reduced the sound? अरे भाई ये कौन है पापा जी? ये मैंने फोबोस को नया स्किन पहना है, मतलब नेमियन लायन का पेल्ट एकदम. वो ओरिकैल्कम दे के मैंने कमाया है उसमें, पता है. Could be one of Stentor's scouts. Looks like he's run into some problems. Oh, he is the problem. क्या बोल रहा है भाई? अभी मस्त चल रहा है गेम. आई गेस यू हैव सेट द ग्राफिक्स इन प्रॉपर लिमिट्स. अरे वो FPS का था ब्रो, मतलब FPS की वजह से वो स्ट्रेच हो रहा था. What business is it of yours, Misthios? Do you know anything about this? Dolios. I'm a professional. And a friend. But what's that supposed to mean? If it had been me, I'd have been smart enough to try and hide the evidence. Fair point. Whoever did this was brazen and foolish, leaving it to be so easily discovered. Or they wanted to send a message. Stentor sent me. I'm here to help wherever I can. Stentor sent you? Sparta doesn't fully control Megaris yet. It's easier for me to move freely in certain areas of Megaris than a Spartan. The Athenians have proven more resilient here than expected. But they will not Before stand. Sparta, yes. I've heard the speeches. But until that glorious day comes, we should find out what happened here. Do you have any ideas? Not yet. But I will. I should get a closer look to figure out what happened here. What happened here? Haha, okay. These were professional soldiers. Slaughtered to a man. I don't think bandits could have done this. The supplies are missing.
They can't have gone far, though. They didn't use the carts. Looks like they went this way, into the forest. Don't think I'll find anything else. I should report back. इतने से मेरे रिपोर्ट बैक करना है, यहीं पे तो खड़ा है, चिल्ला देना, ये भाई इधर आ. So was it the Athenians? I found some fragments of a green crystal. Bandits then. The mountains here are riddled with caves, and the war has made them brazen. If it was Athenians, they would have taken the carts as well as the supplies. And bandits, they wouldn't have stood a chance against trained Spartans. What are you saying? I'm not sure. Whoever did this went into the forest. So I'll start by looking there. Okay, the attack happened on the main node of Megaris. The crystal comes from the south of the occupied forest of Tripodiscos. South of the tomb of Tyreus. You're close to the target already. There they are. अरे वाह, इकारोस ने ढूंढ लिया, क्योंकि मेरे पास परसेप्शन इतना लंबा हो चुका है ना अभी, मैं पता नहीं क्या क्या ढूंढ सकता हूँ अभी. हाँ, उसके वजह से भी बहुत होता है. अरे रे, ये भेड़िया आ गया. ले कर लिया पप्पी. Now I'm Cassandra the Wolf Feast, because Wolf ने मैं पप्पी दिया मुझे. Okay, Grave of Tyreus. Where is the ancient tablet though? ऐसे एरियाज में नॉर्मली एंशिएंट टैबलेट्स होते हैं. हाँ, मिल गया. अरे मिल गया. Where is the fucking cave? फिर भी खुजली है ना, आएगा काटने के लिए. क्या लिख रहा है? उसकी वजह से भी होता है कभी कभी, और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि तेरा GFX कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है. अरे हाँ भाई, मैं भी वही सोच रहा था. मैं एक्चुअली वही तो सोच रहा था कि भाई मेरा इतना, अगर ग्राफिक कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये तो स्टटर होना ही नहीं चाहिए. और इतना स्टटर तो नहीं हो रहा था. इट वाज जस्ट दैट इट वाज टेकिंग लॉट ऑफ GPU यूसेज. Is this a private gathering? Or can anyone join? What are you? Please just leave. You don't look like murderers. Was that the Spartans' mistake? What? Wait, no! Please, you don't understand. What's to understand? It all seems perfectly clear. Please, let me plead our case. You'd better tell me why I shouldn't just kill you and return the goods. Please, I'll tell you anything you want to know. Okay. You're the sorriest band of thieves I've ever seen. By the gods, no! We're citizens of Megara. Please, show mercy. This war has already cost us dearly. Like the mercy you showed those Spartan soldiers? We just took some food. Irkanos told us to take it, said he'd make it easy for us. Irkanos? Yes, the mercenary. He said he'd provide food. Told us the Athenians would never let their people go hungry. Explain yourselves. It's not wise to anger the Spartans. Please, we're not thieves. This is our food, our crops. They took it, left us with nothing. Our children are starving. Ah, so you repay theft with murder. A fine lesson for your children. Murder? No! Please, we never harmed anyone. Mistios told us where to find the food. Everyone was already dead. Enough! I didn't come here for a debate. It's too late for talk now. I came to find who's behind this crime against Sparta. There is only one just punishment for your crime. It was our food to begin with. We either die here by your hand, or slowly starve later. If I am to die, I would rather die fighting.
ये लो भाई, ये लो। बाबू जलेला। तो कैसे भाग रहे देखो भाई। अरे बाप रे बाप। भाई इतनी हेकड़ी मेरे को नहीं पसंद। लाओ तुम्हारा जितना भी मेरे को दे दो। चलो इधर कुछ है क्या चोरी करने के लिए? लूट लपेटा नहीं है। ओके मर्सिनरी घूम रहा है इधर। तेरी जात साले। Put it out! Put it out! Put it out! कर ले तांडव कर ले। आजा भाई। अबे अरे भाई दूसरा आ गया, भागो। अरे ये इनका ये पता है क्या घटिया चीज है कि अगर वो लोग अपने कुछ भी मारते हैं ना तो उसका असर तुरंत होता है अपने पे। एंड वी नीड टू एक्चुअली बिल्ड द फायर और बिल्ड द दिस। लाइक ये सबसे घटिया चीज़ है, लाइक बिल्डिंग फायर ऑन मर्सिनरीज। एंड देन अगर मर्सिनरी चाहे तो भाई सीधा सीधा अपने को एक शॉट में मार सकता है। मतलब अगर वो उसने पॉइजन एरो या फायर एरो मारा तो अपने को आग लगने में देर नहीं लगती और अपने पॉइजन का इफेक्ट करने में देर नहीं लगती। बट इफ वी आर टू शूट देम, साला उनके ऊपर बिल्ड करना पड़ता है फायर और पॉइजन। ये क्या फालतू की रही है? मतलब इधर गए हो दोनों। एक 17 लेवल का था। अच्छा वही मैं वही सोचूं कि मैं इतना मार क्यों खाया उससे। वो गई, वो दूसरी वाली मर्सिनरी 100% गई अभी। उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। उसकी हेल्थ फुल हो गई। व्हाट द हेल भाई। तो सड़े हुए से वो एनिमल ले घूमते हैं ना वो लोग भाई, वो लोग भी अलग से असर मारते। मर गया वो बीस्ट उसका। भी दूसरा किधर गया वो मर्सिनरी? 100 एंड ओके 13 मीटर्स अवे चलेगा। तू मरेगी उसके पहले बिचारी। हाँ क्या तड़पी है भाई। ये तो ये फालतूगिरी जो है ना गेम में इसका कि अपने को फायर बिल्ड करना पड़ता है इन लोग के ऊपर। ये रहता है क्या? नाम तो ऐसा रखा है सोल टेकर। चल वो देखो दूसरा वाला क्या एग्जैक्ट लोकेशन पे है। अरे अबे यूएवी घुमा रहा है क्या ऊपर? ये लोग ऐसे मार मार के मेरा रैंक ऊपर आया पता है। क्या चुतिया चीज है ये। Did you find the ones responsible? I found your supplies with a bunch of hungry Megarians. And? They won't trouble you again. Then it is good news. Soon Megara will be secured and we will push on to Athens. Hungry Megarians are the least of your worries. But there's something else. Have you heard of a mercenary called Irkanos? Irkanos? Yes, he's working for the Athenians. So the rumors go. This is all his doing. These mercenaries are persistent, I'll give them that. You've done well here, but if you really want to help Sparta, I have a task for you. What did you have in mind? Hunt him down. Show him that no mercenary dog will interfere with Sparta's plans. Since you have such a high opinion of mercenaries, why even send me? I'm sorry. It's just this man Irkanos is like a thorn in our foot. He's a menace to all Spartans here. Please, will you help us? अरे 100% छावा है मैं। I'll do it. If he's this much trouble, I take it there is a sizable reward. Of course. Just think of how much he'll have on him with all the drachmi Athens has given him to thwart our plans. I suppose you're right. Any idea where to start looking? He could be anywhere. Most likely, he's nestled up close to the Athenians. We've sent out a couple of patrols, but they never returned.
And we can't spare any more men at this time. Sometimes you're better sending a woman anyway. ओके क्या लिख रहा है भाई? हाँ बे बिल्ड करना पड़ता है अपने को एंड वो लोग एक शॉट में अपने पे फायर और पॉइजन मार देते विच सीम्स कंप्लीट नूब। अरे भाई ये इसकी वजह से ही वो गेम में ना पब्लिक थोड़ा भड़क गया था। अभी इसलिए उन्होंने ये सारा अच्छा कर दिया था कि असैसिन्स जो मिराज बनाया ना उन्होंने इसीलिए ऐसा बनाया कि ब्लेड से अगर कितना भी हैवी एनिमी हो तो वो उसकी जान चली जाएगी। मेरे साला फालतूगिरी चलते रहता है इसमें। They'll keep a sharp watch here. तो हमको उसको कौन सा मारना है? हमको तो एनिमल को छोड़ना अगर अंदर एनिमल है तो। Is there any animal here? इंसानों को बंद करके रखा है कमीनों ने। Turn away and get out of Stop! You're allowed in here! I promise you pain before death! Poi dissolve! Oh no, you don't! अरे वाह भाई उसका एरो लगा मुझे जाके। Let's get this over with! अरे फिर आ गया वो छंडू। अरे ये इनका बहुत गलत है पता है, वो कहीं से भी ले आते हैं मर्सिनरीज को। और एक तो लेवल मैच करना पड़ता है उसमें, अगर लेवल मैच नहीं हुआ तो भाई साहब ऐसा मारेगा वो ऐसा मारेगा। तो ये केव भी कुछ हो सकता है एक्सप्लोरेशन के लिए, बट अभी मेरे को नहीं मालूम कि अगर मैं उसमें जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। बैटलफील्ड केव क्या है? एनिग्मेटिक ओस्ट्राका, एनिग्माता ओस्ट्राका। अरे भाई इतना अंधेरा है कि मेरे को ओस्ट्राका क्या कुछ नहीं दिख रहा है इधर। ओके ये गेम को पता है क्या किया था उन्होंने, मतलब पब्लिक को ना, मतलब जैसे वो अनॉय करने के लिए बनाई थी ये लेवल सिस्टम। चल साले मेनू मर्सिनरी है साला, वो 17 लेवल का है, वो साला घूमते रहता ना आजू बाजू, बहुत कुत्ते की तरह मारेगा वो। आजा मारो। तेरे बाप ने एरो रखे थे इधर? अच्छा मेरे को एरो लगा ना, मतलब अच्छा तो लोग कैसे दिखा दे? फॉर ज्यूस। अबे पहले ज्यूस तो पी ले तू। ज्यूस की बात कर रहा है, नुन्नू मारूंगा तेरे साला है बड़ा। हेडशॉट से नहीं मर रहे बंदे, इतने लोफर लुखे हैं वो लोग भाई, हेडशॉट से नहीं मरते यार। ये कैसी गेम बनाई इन्होंने? They'll be on high alert here. अरे तेल लगाने का इनका हाई अलर्ट। वाह वो पड़ा ही नहीं उधर। हाउ स्टूपिड। जा बाबा जा, घर पे जा, चिल्ला रहा है। वो केव वाला तो मैं नहीं करने वाला। केव में आई थिंक खाली ट्रेजर ही होता है, तो कैंप्स जहाँ पे होगी वो वाले कैंप्स पे अगर अपन रेड करेंगे तो दैट वुड हेल्प अस टू टेक मैगारीज बैक। वापस वो वहाँ पे घूम रहा है वो लल्लू चंद। अरे तो इतनी शील्ड है ना बंदे के पास। वाह मेरे को मेरी आग मेरे को लगी, सही है ना। अरे भाई भाई भाई, भाई। अबे लोग फायर और मार रहे, क्या मार रहे लोग? अरे फक इट मैन, ये एथेनियंस इतने लेवल के हैं, मुझे मेरे में अक्ल कम है। Don't worry, I'll end this soon. I was this far. Death is coming, Misty. We're making this too easy. अरे what? अरे वो मर्सिनरी फिर आ गया यार, चंपक लाल है वो भाई। उनके एरोस क्या टाइमिंग पे आते हैं, मतलब क्या परफेक्ट एरिया में पड़ते हैं। वाह वो देखो मर्सिनरी का वो एरो देखो भाई, भाई मजा आ गया मेरे को तो।
इतनी स्पीड है बेंच, अपन भाग भी नहीं पाते, पता है। क्या पप्पा की दिवाली है? अपनी हेल्थ भी नहीं बढ़ती है, मतलब इतना सेक्सी गेम है नहीं है, क्या बताऊं मैं। अरे और कौन आ गया भाई, भाग। अरे भाग रे लौंडा। इतनी सारी फोर्सेस है एथेनियन इधर, क्या पता हूँ मैं। स्टेल्थ तो गया तेल लगाने मेरा। मैं दो मर्सिनरी मेरे पीछे पड़े हुए हाथ के, मतलब बम के, मेरे गांड के पीछे पड़े हुए। The smell of spring is in the air. Reminds me of Sparta. भाई वो मर्सिनरी का लेवल क्या है? 16 लेवल और 17 लेवल है। मरेंगे जरूर, इतना 100% है, मरेंगे कुत्ते की तरह। ये हम प्रण लेते हैं कि इनको हम मारेंगे। इसमें ये प्रॉब्लम यही क्रिएट कर दी थी उन्होंने कि यार मतलब इतना लेवल बढ़ा के रखा हुआ है, मतलब ये लोग ऐसे धो रहे आके, अपने पास शील्ड नहीं है। उस हिसाब से ओरिजिन्स में अच्छा था, ओरिजिन्स में अपने पास शील्ड थी तो वी कैन एक्चुअली सेव आवर सेल्व्स। बट यहाँ पे अथेनियंस के पास इतनी भयंकर वाली शील्ड होती है ना, और अथेनियंस आर वेरी फास्ट। पता नहीं कैसे, मतलब वो बहुत तेज़ होते हैं मारने में। स्पार्टन्स आर बिट हैवी तो द फॉर्मेशन, और वो स्पीयर से अटैक करते, ये स्वॉर्ड से अटैक करते। तो मतलब ये देखो अभी उसको पता है अपन कहाँ पर है, मतलब ये इट्स अनदर वेस्ट ऑफ टाइम। मेरे को हिरकानोस ढूंढना है, लेकिन हिरकानोस ढूंढने से पहले मैं इन गधों को पहले मारूंगा। भाई एग्जैक्ट लोकेशन पे आया है साला, जैसे बात तो ऐसे कर रहा है जैसे जीपीएस से ट्रैक कर रहा हूँ भाई। अबे कितना फालतू गेम है भाई ये। एरोस जस्ट गॉट वेस्टेड लाइक हेल, मतलब कुछ भी नहीं था वो। क्या यूजलेसनेस है रे। एक एक को ऐसे पकड़ पकड़ के मारूंगा। इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि मर्सिनरीज जब ये जगह लेना शुरू कर देता है ना भाई कैंप के अंदर। अरे स्पॉटेड नहीं, मैं इसको ऐसे इसकी जान निकाल सकता हूँ, पता है अकेले गई बंदे के। मैं 15 लेवल का हूँ, मैं इसकी ऐसी गांड मार सकता हूँ ना भाई। ये देखो क्या लूजर गेम है भाई। अरे ये दूसरी आ गई, ये देखो फालतू गिरी क्या रे। नाइस, थैंक यू इकारोस, थैंक यू। घंटा, दिस इज वेयर यू डाई। ये बात भैया जी, चलो नाइस एरो ब्रो, नाइस एरो, नाइस एरो ब्रो। ये लिंक्स पीछे पड़ा है, कुत्ता है। बेचारे ये क्या था? अरे ये सब क्या फेंकते हैं जादू तो ना, ये लोग क्या करते हैं भाई। वाह क्या घटिया शॉट था एरो का। रूइन टेम्पल ऑफ अपोलो, चामा आयला भिखारी, ये लोग भी पीछे पड़ गए मेरे। नाइस। अरे इसमें शांति है या नहीं, मतलब जीवन को। मेगारिस में आते ही मेरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी लोग ने। ये स्पार्टन लोग बचाओ रे बाबा, मेरे को बचाओ, विक्ट्री, ये वो फलाना ढिंका। वो बेचारे स्पार्टन की धो रहे वो लोग। ये देखो अपने पे तुरंत फायर लगता है भाई, ये कमाल की गेम है पता है।
Tricks do not scare me, bitch. उसी को मार, उसी को मार। इसकी माँ का, कितने लोग मेरे पीछे पड़ेंगे? वाह भाई वाह, क्या गेम है ये, कसम से। See the gods today. भाई कितने लोग पीछे पड़ गए पता है, एक मेगारिस में खाली घुसा हूँ मैं। और टू और बजा भाई इधर, और कितने लोग आएंगे मेरे पीछे भाई? अरे ये गेम में क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है इनका, मतलब समझ में नहीं आता। ये सारे के सारे अभी तुम लोग कैंप के अंदर ही लेके चलता हूँ। आओ तुम लोग। बहन चोद क्या मारा है? अरे बचाओ रे मेरे को, काय के स्पार्टन तुम लोग, बचाओ मेरे को। अभी तुम लोग की लाइफ लूज कराता हूँ मैं, थोड़ी देर रुक जाओ खाली। तो मोटे वाले को पहले मारूंगा मैं, टेंशन नहीं है अपने को। अभी ये स्पार्टन भी मुझे मारेंगे, मतलब नहीं, मतलब वो स्टेंटोर ने जो मुझे दिया था उसका क्या करूं मैं? अरे बचाओ मुझे मारने से। अबे ये चूतिए लोग, हर आदमी अपने पीछे पड़ जाता है। उस मर्सिनरी की पेलो, मेरी नहीं। अरे मेरे को तुम लोग को नहीं मारने का है, क्यों पीछे पड़े यार मेरे लोग? अरे लेकिन मैंने किया क्या है? मतलब मेरी क्या गलती है? भाई मैं ढूंढने जा रहा था उस बंदे को, लेकिन वो तो मिला नहीं। ऊपर से मेरे को और प्रसाद दे दिया अलग से। भाई कितने लोग हैं वहाँ पे? भाई कितने लोग हैं? अरे पूरा कैंप का कैंप भरा पड़ा था, पूरा कैंप मेरे पीछे पड़ गया पता है। साला क्या नाटक है भाई गेम में। अरे काय का कॉट ले, मार खत्म कर इसको साले को, छपरी को। Impossible. भाई साहब इसकी तो हिरकन उसकी माँ की आँख। ढूंढने की जगह गया था किसको भाई, क्या कर क्या रहा था मैं बाद में। एक तो मुझे वो एक ये भी स्कैन करना है। Let's move.
अभी तीन हेलमेट वाले मेरे पीछे पड़ने वाले भी, देखो अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। मेगारा द सिटी मेगारिस। एक्चुअली अपन निकाल सकते हैं बाउंड्री। This is what war looks like. Not what the stories make it out to be. लॉल क्या पब्लिक है इसमें? अरे भाई बेकार है। मैं मतलब एक मिशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं वुल्फ ऑफ स्पार्टा तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन भाई तब तक तो ये लोग मेरे पीछे पड़ के पता नहीं कितनी बार मारेंगे मेरे को। अरे ऐसी हद है ना ये गेम में कि एक बार तुम अगर मर्सिनरी में घुस गए किधर किसी के पीछे, भाई हो गया तुम्हारा। और सारे लोग तुम्हें पकड़ के मारेंगे, तुम कितना भी भागो वहाँ से गेम में से, सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ के बजाएंगे तुम्हारी। एंड मर्सिनरीज का ऐसा है भाई, वो भी कहीं ना कहीं से स्पॉन होके आते हैं। मतलब अगर समझ लो तुम्हारे पे बाउंड्री लगा हुआ है ना, अगर तुमने किसी कैंप पे हमला कर दिया तो वो मर्सिनरी तुमको प्रॉपर्ली ढूंढ के मारेगा। अभी तो शार्ड्स आए नहीं अपने पास, अभी वो पहला मिशन आएगा, फिर शार्ड्स आएंगे अपने वो कल्ट ऑफ कॉस्मोस को मारने के बाद। उसके बाद अपने पास बहुत सारा होने वाला है। ये टाइम लिमिटेशंस वाला नहीं चाहिए यार, ये ले लेता हूँ। ये मेगारा में अपने को ढूंढना है एक्चुअली। मैं इसको देके पहले सबसे पहले अपने ऊपर से बाउंड्री हटा देता हूँ। अच्छा नहीं, हाँ लीडर हाउस में पहले मारना पड़ेगा। अरे हिरकनोस है किधर हरामजादा? इज ही हिरकनोस? क्योंकि मैंने बहुत पहले मारा था, मैं भूल गया मैं एक्चुअली में कि हिरकनोस होता कहाँ पे। उसको ढूंढना होता है इतना पता है मुझे, बट पका आदमी होता कहाँ है वो भी नहीं मालूम। यही रहा कुतरिया हेलमेट वाला। ये आई थिंक एक टूम में, मेरे ख्याल से नीचे टूम में जाना ज़रूरी है। मतलब भाई क्या पकड़ रही है इकारोस? ये हिरकनोस को तो मैं मारूंगा। This must be Irkanos' camp. कैंप लग रहा है, घड्डा कैंप ही। You'll be with Hades soon. Attack! I see you! Someone better get over here! Right now! This has been quite profitable. Maybe I should hunt down more mercenaries. अरे भाई इसका दिमाग घूम गया, अरे सिविलियन का दिमाग घूम गया। अरे पागल आदमी। अरे भाई इनको क्यों मरने का है? अरे कितने लुक्की के मनाई पता है ये? इतना फालतू बैटल्स है इसमें, इतना फालतू बैटल्स है कि भाई पूछो मत। भाई अब मैं इनको मारूं? उसकी हेल्थ नहीं जा रही है क्या? मजाक है? भाई ये मेरा ये बढ़ाता रहेगा ऑब्वियसली। मेरा बाउंटी और बढ़ेगा इससे। ट्रेजर किधर रखा है? ट्रेजर
अरे साले पागल आदमी. So at least we are completing the area. That's it. The Temple of Megara. बेसिकली वो बाउंटी हंटर को मारने के बाद अपना ऑटोमेटिकली जो बाउंटी है वो निकल ही जाता है अपने सिर पे से, बट ही इज़ ऑब्वियसली कंसील्ड इन सम लीडर हाउस और फोर्ट, या फिर कोई कैंप में बैठा हुआ रहता है वो लुक्खा आदमी जिसके ऊपर वो बाउंटी का पाउच का साइन आता है. सो यू जस्ट नीड टू किल दैट मदरफकर एंड देन यू आर गुड टू गो. इसके बाद सबसे ज़्यादा मज़ा तो आने वाला है इनको मारने में. जो कल्ट ऑफ कॉस्मोस के बंदे होते हैं ना भाई, वो खतरनाक रहते हैं. मतलब उनको मारने में बहुत ही मज़ा आता है. मुझे कॉमेडी लगते हैं वो लोग, कॉमेडी. फिलहाल तो अपने पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. लेट्स टेक द एबिलिटी फर्स्ट रादर देन डूइंग एनीथिंग एल्स. टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ योर गेयर पेयर्स ऑफ इंक्रीज आर्मर बाय 30%. ऑब्वियसली डैमेज नहीं चाहिए भाई मेरे को अभी, ये डैमेज लेने का टाइम नहीं है. अभी भी इसमें बहुत सारी एरियाज जो है वो अनएक्सप्लोर्ड रहने वाले. ये भाई डोलियोस बच गया, इधर मारामारी चल रही थी उसके साथ, मुझे लगा मर गया होगा. इरकानोस. What about my reward? We never entered into a contract. This is something you did yourself. But be assured, Sparta is grateful. Great. Okay. वैसे अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? Athenian leaders, kill the Athenian leader of Megaris, crumble and burn, destroy Athenian supplies, one-man army, kill Athenian soldiers in Megaris. अच्छा, वो ऑब्वियसली वो जो उनके कैंप्स है उसी में होने वाला है. सो वी जस्ट हैव टू गो देयर. जो अपन वो कैंप में घुसे थे ना मारने के लिए, एक तो फोर्ट होता है, फोर्ट में मेजर चीज़ें हो जाती है. तो मतलब फोर्ट इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद. एक तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स है. अभी पहले वो क्वेश्चन मार्क्स को मुझे पैगाई क्या पगार. इसमें एक्चुअली एक ही चीज़ जो है वो जो गेम में बहुत बड़ा फ्लॉ है और हमेशा रही है इज़ द लेवल सिस्टम. मतलब एक तो अपना लेवल बढ़ते ही सामने वाले का लेवल वो लोग बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि इट्स जस्ट टू मेक द गेम फेयर इनफ फॉर सम गुड कलेक्टेबल्स या वैल्यूएबल्स जो बोलते हैं रिवॉर्ड्स. आई वॉज लाइक कि क्यों देना है क्या रिवॉर्ड्स. इसमें वैसे भी कोई वेपनरी इतनी जल्दी काम करती नहीं है किसी के ऊपर. व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग देम वो बंदे वैसे भी जल्दी मरते नहीं है. सारी चीज़ों में लेवल सिस्टम इसमें बहुत भंकस करके रखा था. इसलिए मुझे और लोगों को, बहुत सारे लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए जो ये गेम पसंद आई असैसिन्स क्रीड मिराज, वो इसके ही कारण है दैट यू कैन एक्चुअली किल द एनिमी विद द स्टेल्थ. मतलब या तो तुम उनको वहाँ से भगा दो, लर आउट करो किधर मारने के लिए, या क्लोज टू अनट्रैक टारगेट. ओके, That's what I'm looking for. इसमें आधा तो इकारोस मार्क भी नहीं करेगा. सो वी जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग सर्टन थिंग्स. दीज आर द एंट्री पॉइंट्स. यहाँ पे और सप्लाईज है. अभी बाद में कुछ चीज़ इकारोस फुकट का मार्क करता है. तो चलिए जाके बजाते की. फोर्ट गैरनिया. Should be extra careful in this area. Fort Hierania is formidable. This must be where the Athenians keep their war chest. I should use Icarus to find what I need. ओके, नेशन पावर गया. इसमें नेशन पावर वाला चीज़ बड़ा लंबा है, पता है, बहुत टैकी है, कंटाळा लगता है. देखो इसमें ऑप्शंस है दैट यू कैन गो एंड फाइट स्ट्रेट अवे, या फिर पूरा का पूरा स्टेल्थ ऑपरेशन रखो अपने पास एंड देन गो स्लाइटली, आराम से, धीरे से, टेक योर टाइम. अप्रोच मैटर करती है इस गेम में, बिकॉज यहाँ पे जो ऊपर ये लगा हुआ है उसको जाके पहले रिक करके रख देते हैं, सो दैट इफ़ वी आर स्पॉटेड समहाउ वो बंदा जाएगा वहाँ बुलाने के लिए रिइंफोर्समेंट्स, लेकिन ये अपने आप फट जाएगा. अरे ये देखो ग्लिच देखो भाई, मस्ती एकदम. यही तो है असैसिन्स क्रीड की ब्यूटी. बीसीजिंग बैंडिट्स, न्यू क्वेस्ट्स. ये क्या, रिपोर्ट टू द कॉन्टैक्ट इन किरहा फोकिस.
Obviously now the thing has been rigged. Who cares? इसको मैंने मारा था ना, ये जिंदा कैसे हो गया वापस? भाई बड़ा ही लफड़ा है गेम में, बड़ा ही लफड़ा। ओके, आर देयर एनी एनिमल्स डाउन देयर? सबसे पहले एनिमल ढूंढने का मेरे को। हाँ, अरे भालू, भालू मरेगा नहीं जल्दी। अरे चल बे, खुला ही नहीं वो, हट। यो किसको ढूंढ रहे हैं लोग? ये देखो, ये मस्ती, मुझे ये मज़ा आता है, पता है? इनको लूम लपेटे में ले लो इधर आजू बाजू, एंड देन अरे अरे भागा 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 भागा, अरे भाग गया साला। भालू जल्दी मरता नहीं है, लेकिन भाई ये लोग इवेंचुअली मार ही देते हैं उसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मार दिया भालू को? नहीं, भालू जिंदा है। भालू कर क्या रहा है? अरे यार, ये लोग खा फिर आ गया इधर। अरे साला एकदम पीछे चल के आते, पता है? ये लोग इतने हरामी होते हैं। ये लियांड्रा द वुल्फ रेडर, श्यामाइला। लियांडर पेस पकड़ो इधर से, लियांडर पेस। अभी 100% आवाज करेगी इधर मारा मारी करके मेरे साथ। वो उसका वुल्फ है, लियांड्री का, वो लियांडर का वुल्फ है। वो लियांडर लियांड्री जो भी है, वो बेचारा मर गया। मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाते साले घूमते घूमते, खाली वो पीछे का भोपू बचता है, एंड देन यू सी दैट दे आर जस्ट बिहाइंड यू। क्या है मतलब? सरप्राइज मदरफकर। ये इसलिए फोर्ट वाली चीज़ें थोड़ी टीडियस है इस पर। दूसरा भी आ गया इधर, दूसरा भी आ गया। दूसरा भी मर्सिनरी कैंप के अंदर घूम रहा है 36 मीटर से अपने गंडिया के पीछे। The Athenian soldiers won't be so eager to fight when they don't get paid. Exactly, they don't have drachmi. Drachmi. Drachmi तो ऐसे बोलते हैं। क्या पॉलीडिक्टिस द पर्स्ट 14 लेवल का भाई, उसका खुद का भालू है भाई। हाउ कन्वीनियंट ना, मतलब भालू को लेके घूमना। इसकी भी मारता हूँ, रुको। भाई वो ऊपर क्यों चढ़ रहा है भाई? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। भाई दिस गाइस आर लाइक इस क्या होता है? इस मैंने 12 मर्सिनरी ऐसे ही मार दिए। ओके, अपने को पूरा फोर्ट कैप्चर करना है तो भी। अरे भेंचो, बेचारा कैप्टन पॉलीमार्क जो भी था वो। लाइक आए तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो कैंप है उसको उड़ा के ले जाना इज मच बेटर। तो अब जब अपन आए ही हैं इनको नंगा करने के लिए, तो क्यों ना पूरा नंगा कर दे। व्हाई नॉट? कंप्लीटली नेशन पावर डाउन है इनका। ये क्या घंटा लड़ेंगे आके अपने साथ?
बेचारा। What the fuck? टेंग 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 टेंग। 11,000 XP सीधा मिला है, पता है मुझे। क्रम्बल एंड बर्न वो भी हो गया। वॉर सप्लाई बर्न करने का है अभी एक जगह पे आखिरी, तो फोर्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। मतलब फिलहाल अथेनियंस पूरे नंगे हो चुके हैं। आई एम लाइक दे डोंट हैव एनीथिंग। -10 नेशन पावर। एक्चुअली मुझे ना इसको मारना है, अदरवाइज वो जब ये अपन फाइट करेंगे ना तो उसके बीच में मर्सिनरीज घुस जाएंगे। मेरे वो मर्सिनरी कहाँ पे था, वो जो मर्सिनरीज से बचाने के लिए जो होता है ना बंदा। शुड आई टेक दिस नेक्स्ट अपग्रेड अगेन और एल्स आई शुड टेक वेपन्स क्लीन एंड शार्प इंक्रीज वॉरियर डैमेज। ये हिटिंग पावर चाहिए अपने को गेम में, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है गेम। ओके देयर इज अनदर मर्सिनरी। भाई साहब बंदा मेरे सामने स्पॉन हुआ है, लाइक क्या हद है गेम। लेकिन खुशी पता है क्या होती है, लाइक व्हेन दे डाई इन इंस्टेंट। मर्सिनरी क्लू दिया है उसने। अच्छा डेबोरा द फ्लैश। नहीं भाई हम तो खाली बैरी एलन को ही मानते हैं फ्लैश, हम डेबोरा को फ्लैश नहीं मानते। अरे यार मतलब इसमें और अपने को कहाँ जाना पड़ेगा। देयर इज अ पाउच साइन, मतलब जो होता है ना। ये रहा इधर। Antilochus the kneeling leader has isolated himself. The leader bodyguards will leave their side. Okay, weekend. ये अब ना यहाँ जाना पड़ेगा just to kill them. मर्सिनरी को क्या मारा है। अरे मतलब भाई वो स्पॉन होते, कसम से स्पॉन होते, तुम्हारे पीछे मारेंगे आके स्पॉन होते हैं। तुम्हारी ना सीधे बम पे आके खाली वो भोपू बचता है, दैट्स इट, एंड यू जस्ट हैव टू सी वेयर दे आर। टॉक टू द ब्लाइंड मैन प्रिंस ऑफ पर्सिया। यार ये थोड़ा बोरिंग है एक्चुअली, ये वाला क्वेस्ट करना नहीं है। आई जस्ट डोंट वांट टू इनिशिएट दैट राइट नाउ बिकॉज ये मुझे पता है क्या है, थोड़ा लंबा सा है, सो वी विल जस्ट ट्रैक इट लेटर ऑन। फिलहाल देख लेता हूँ वो बाहर जो लीडर है वो बाहर निकल गया है क्या, क्योंकि लीडर हाउस का जो मिशंस होता है वो भी तुम कर सकते हो वैसे, बट यू हैड एन ऑप्शन। ये कहीं बाहर भिखारी सामान बैठा होगा रास्ते पे, वो रहा मरा रहा है वहाँ में। डोंट टेल मी ये लीडर है, चल बस। Now the Athenian leader is dead, I should return to Stentor. मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, मतलब हमने क्या तो हार बिगाड़ा है, ये फोर्ट है ऑब्वियसली। ओके सो दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अभी एटलीस्ट एक थोड़ा एरियाज देख लेते हैं खाली आजू बाजू, क्योंकि फिर मुझे पता है क्या करने का है। अब ये वुल्फ को भी और खुजली आई मेरे को मेरे पीछे पड़ने की, कमीने को। ओके तो बाउंटी मेरा वैसे भी चला ही गया है, वैसे भी वो लीडर था। अनदर मिलिट्री कैंप हियर। देखो टूम वगैरह तो बहुत इजी है, इट इज़ नॉट टू बी थॉट, ऐसा है तो अपने हिसाब से सब लोग कर सकते हो। ये सब वापस से कैप्चर कर लिया करो। यू माइट फाइंड सम सॉर्ट ऑफ क्वेस्ट आइटम्स इन दिस एरियाज। तो इसलिए मैं पायरेट कैंप वगैरह जो भी होता है अंडरग्राउंड अंडर वाटर जितना भी रहता है, मतलब केव्स हो गया, अंडरग्राउंड केव्स एंड एटिका। अच्छा आई मीन एटिका नहीं एटिका नहीं जाना मैं अपने को। एक तो वुल्फ वगैरह का सबके लेवल देखे रखे ना भाई, बहुत ज़्यादा फालतूगिरी करते हैं। एक पप्पी में तुम्हारे घोड़े को गिरा देंगे एंड यू विल बी अ वेस्ट, नथिंग बट अ वेस्ट। रिपोर्ट टू स्टेनटोर। तो अभी अपनी बहुत भयंकर फाइट होने वाली सबके साथ।
ये केव वगैरह तो भाई कोई भी ऑफलाइन कर सकता है, जस्ट दैट मिशन करते रहा करो। एंड कोई मिशन इनिशिएट करने से पहले जस्ट डू वन थिंग, दैट गो टू दीज एरियाज लोकेशंस एंड सारा का सारा ट्रेजर हो या कोई चीज़ हो ना तो उसको कंप्लीट कर लो, सो दैट यू माइट फाइंड समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ क्वेस्ट आइटम्स। तो अपने को क्वेस्ट को ऑन करना, फिर वापस से क्वेस्ट आइटम ढूंढने जाना, इससे अच्छा बेटर है कि भाई वो कैसेंड्रा खुद बोल देती है दैट इज दिस द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, एंड देन हो गया मिशन कंप्लीट, एक्सपी मिल गया, फ्री, मज़ा करो। एक तो यहाँ पर ऐसा है इस गेम के अंदर, लाइक इतने वहशी लोग घूमते हैं ना भाई। वो स्टैंडर क्यों भागा वहाँ से? I hear good things from my commanders, mercenary. What news do you have? The Athenian commander is dead. Megaris is ready to fall. Good. The wolf has ordered the attack. I'm glad you're here to join us in our march to glory. चलो। I'm proud to fight by your side. Yes, you have earned your place. We will win the day for Sparta and the wolf. Come, we must reach the forward camp. Okay. I am ready. Follow me. We must prepare for the battle ahead. Glory! Tell me about the wolf. He is a great man. He will lead Sparta to victory against the... No. What is he like as a man? As a father? He used to be admired. Strong, caring in his way, but sometimes I... Yes? Nothing. Just... He gets this faraway look in his eyes. And I sense a sadness there. He is Sparta's general. But he is also made of flesh and blood. Life cannot be lived without some regrets. मेरी स्लो स्पीड और उसकी स्लो स्पीड भाई अलग ही है, और ये भागती है फिर, नहीं तो तेरे फॉरवर्ड कैंप पे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और कितना क्वेश्चन मार्क्स है इधर? This won't be like any other battle I've been a part of. Are you ready to crush the Athenians? I'm ready for war. ये एक्चुअली बहुत सही पार्ट है पता है इस गेम में। यू कैन टर्न टाइड्स द वे यू वांट। कोई स्पार्टन एरिया होता है, यू नीड टू कैप्चर द फोर्ट, और या फिर वो जो उनका लीडर का हाउस, वो जब कैप्चर करते हैं अपन तो ऐसा होता है दैट इट बिकम्स वीक। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि अपने को कहाँ पे किसको मारना है, कैसे मारना है। ये मेन आदमी लोग को मारना पड़ता है इसके अंदर, तो भाई ये सिनेरियो ऐसा है। ओके, अभी कौन है इनका लीडर भाई? वो रहा, मिल गया कमीना। अरे मेरे को क्यों लग गई रे आगे चट्टी में? साला अपने को एलिमेंटल डैमेज तुरंत मिलता है गेम के अंदर साला।
अबे कितना लंबा के मारता है भाई। Look at his stretch. अभी दूसरा कैप्टन किधर है भाई? ढूंढना पड़ता है कैप्टन इसमें तो। कभी कभी पैर ही नहीं करती है यार, ये कमाल है। वो रहा कैप्टन, वाह हरामी। उधर से फाइट कर रहा था पहले, क्यों नहीं दिखा मुझे? अभी कहाँ है सारा कैप्टन? भाग गए साले, सबके सब भाग गए, सब भाग गए साले। क्या भागे भाई, उठा के पैंट उठा के भागे। ये माय ब्रदर स्टेनतुर। The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander I wishes... heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. जय महेशमती। It appears I have other matters to attend to. You can just fuck off. For a mercenary, not keep the This is it. What do I even say? कितने सारे कंप्लीट हुए भाई एक साथ मिशन? Murderer! She has killed him! So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Here, Pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty Enough! anymore.
can't change the past. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? You've avoided the past long enough. Now you will answer to me! Though you deserve death, there is no honor in vengeance. You must face the ghosts of your past, Pater. And that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you and your brother as if you were truly my own. But you were never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother. Find her? Wherever Merini is, she knows far more than I do. Where will you go? To find my honor. Beware the snakes in the grass, Cassandra. ये मोमेंट बहुत अच्छा है वुल्फ एंड हिज डॉटर हाँ I should head back to Varnavas. निकोलाउस स्वॉर्ड इसमें क्या सटा सेट अभी कंप्लीट होगा ना अभी सब तो इतना सारा एक्सपी मिलता है एक साथ में ऑनवर्ड टू फोकिस मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से ही करके रखी हुई है सो दैट इज़ वाई आई एम नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेन मिशंस इसमें और कुछ है ही नहीं खाली साइड मिशंस है ऐसे है मतलब जो सिर्फ और सिर्फ खाली मतलब टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे अरे भाई ये कहाँ से आ गया वो बीच में ओके लेट मी सी द एबिलिटीज़ फर्स्ट अभी इसमें और मैं क्या ले सकता हूँ वो देख रहा हूँ बुल रश ठीक है एक बार ये किक यूज़ कर नहीं सकते बिकॉज वी नीड टू प्रोग्रेस फर्दर इन स्टोरी वो अपना स्पीयर जब तक अनलॉक नहीं होता ना प्रॉपरली तब तक वो नहीं आ सकता नेक्स्ट एरोज कैन बी क्राफ्टेड नाउ अभी क्या कर सकते हैं एक्सप्लोसिव एरोज ओके दिस इज़ गुड एक मिनट मेरे को निकोलाउस की स्वॉर्ड भी देखनी थी किधर गई Is it more powerful than this one? ये 17 लेवल की है जैसे 16 लेवल राइट नाउ हम 18 लेवल सो क्रिट डैमेज बढ़ा रहा है दिस इज गिविंग 8+ डैमेज ऑन एथेनियन सोल्जर्स आई थिंक फोकस में एथेनियन सोल्जर्स ज़्यादा है सो दिस इज़ गुड ऑप्शन यार बाकी सारी को चीज़ों को डिसमेंटल कर दिया करो यार तो उससे बहुत सारी चीज़ें वापस मिल जाती है रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं जैसे कि वुड हो गया या फिर वो हो गया ये 35 पड़ा है एंशिएंट टैबलेट्स मेरे पास ये मेन एंशिएंट टैबलेट सिर्फ इसी के लिए यूज़ होते हैं ये सब करने के लिए तो वो कर लिया करो वो टेम्पल्स होते हैं नॉर्मली जिसमें कि खाली तुमको एंशिएंट टैबलेट चोरी करना है बस बाकी जो लेवल बढ़ जाता है कैप्टन को मार देना जाके बस तो हो गया पगाई पगाई पगर पगाई So, did you kill your father? Step-father. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step patricide. Nikolaos raised me, trained me. He was my father. Even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Thanks.
I'm glad to have you around, Varnavas. I'm happy to be here. Would anything else help? Finding my mother. She's alive, Varnavas. At least, Nikolaos thought so. Some good news, praise Ira. What's your plan? What course should I set, Captain? For now, we go to Phokis. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money and an explanation. Aye, Cassandra. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. If anyone has answers for you, it's the Oracle of Delphi. The Oracle's predictions destroyed my family. The Pythia has the wisdom of Apollo himself. Now, I'll admit, if people choose to ignore her, they might court disaster. If we'd ignored the Pythia, my brother would still be alive, and our mother would be safe at home. Back to business. You know where to meet Elpinor, I suppose? His home is in Pilgrim's Landing, but Nikolaos' last words to me were a warning of snakes in the grass. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one who should prepare. Meet me at Apollo's temple in Delphi when you're done dealing with the snakes. Okay. Oh, and Cassandra, in all the excitement, I nearly forgot. Terrible things have happened to your home. That old house? It was barely standing to begin with. I meant Kefalonia. A sickness has spread across the island. They say it started in Kausos. There doesn't seem to be a cure. Many have died. Malaka. That priest was right. Just say the word. We can return to Kefalonia whenever you wish. Thanks, Varnavas. I'll keep that in mind. Let's go. Pinor has a lot of explaining to do. Helix credits क्या है? 200 Helix credits have been credited to your account. You can spend them by pressing T in the menu to search, store and acquire unique rewards. Okay. वो देखेंगे बाद में, अभी कोई इसका काम नहीं है. First of all, we'll go to Focus, right? Focus मैंने already इतना सारा unlock करके रखा हुआ है. These are temples which give you the ancient tablet. अब मैंने दिमाग पता है क्या लगाया. मैंने बैंडी लीडर को नहीं मारा because he was very tough to kill. तो भाई उनको कोई एरो मार के एक फॉल सलाम दे के उनको वहाँ टेम्पल से हटाया एंड देन आई जस्ट लूटेड एवरीथिंग. ख़त्म, अपना काम हो गया. अब पायरेट्स लाइफ बारना बस. हाँ ये पता है, ये सड़ाओ एकदम फालतू सा मिशन है. देयर इज दिस वन क्रूलेस. ओके दिस इज, एक मिनट रुको, पहले वो कुछ लेवल बढ़ा है शायद मेरा. ठीक है, शिप से जाने का कोई मतलब नहीं है. आई जस्ट डू द फास्ट ट्रैवल सिस्टम, बेटर होगा. तो अपने को पहुंचने में भी इजी पड़ने वाला है. वी कैन गो टू दिस शिप डॉक. इसमें पहले से बहुत कुछ कर सकते हो. जस्ट गो एंड सी द लेवल्स ऑफ द आइलैंड्स. क्योंकि कुछ आइलैंड्स है जो 15-19 के बीच में रैंक करती है. सम आइलैंड्स आर 13, सम आइलैंड्स आर जस्ट 14-16. तो मतलब वो सारी छोटी छोटी आइलैंड्स इसको पहले कर लो. यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें कोई ये इनहिबिशन नहीं है उस पार्ट पे. बट द थिंग इज़ दैट व्हेन यू एनकाउंटर सर्टन एनिमीज इन द एरिया, तो वहाँ पे वो लेवल पे फाइटिंग करना बहुत मुश्किल होता है. एंड इवन इफ यू हैव सेव्ड समवेयर, वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. तुम्हारी इतनी सारी एम्यूनेशन चली जाती है उसमें मारने में, उस गधे को, एक बंदे को. आई थिंक ये वाला मिशन जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा, वो मैं उसको पहले से एक्टिवेट करके कर लेता हूँ बिकॉज आई हैव द रिक्वायर्ड क्वेस्ट आइटम. इसको पहले देखते हैं इसके पास क्या है. ये गधा कुछ ना कुछ लेकर आता है. प्रॉब्लम अकर्ड. ओके जाने दो. वो कुछ क्लाउड सेव का इश्यू था आई थिंक कल. वो मेरा इंटरनेट थोड़ा बग मार गया था. तो ये मिशन मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, सो आई नो दिस. What's your problem? What don't I have fucking problems with? The Oracle for one, the sea for another, and don't get me started on my crew. You have business with the Oracle. You're a long way from Delphi. Had business. And my business is none of your fucking business. I ain't shopping for a merc. If anything, I need the gods. You need a god. I'm the next best thing.
You're a live one. That's a good pitch. I'll give you that. So who are you? Captain Yellon of the Shark's Tooth. Shark Tooth's your boat? Do I look like a fucking fisherman? I sail a ship, not a boat. Malaka. I came to see if you needed help. Fuck you. No one asked you to. You know what? Fuck you. Okay, sorry. Been a bad day. I finished my business with the Oracle and was meant to meet my ship here. They're nowhere to be fucking found, and I've been here since last night. So where is the Shark's Tooth? I wouldn't fucking be here if I knew, would I? Okay, let me rephrase. Where was the crew meant to be? Well, I sent my girl Yiki off. Pilgrims get stuck in the shallows around here, and, we sort of help out. Oh, your girl? Yeah, best hand I ever had, and more. Look, find my ship and my Yiki, will you? I'll pay. I'll find out what happened, and bring them back. Do you know where they could have gone? The southeastern shore is pretty rich pickings. Nice cove there to trap lost, wealthy pilgrims. You're a pirate. What if I fucking am? I'm the pirate that's paying you. Anyway, I'm not a pirate all the time. It's more of a hobby. A hobby? You sure the crew didn't mutiny and run off on you? Not with my Yiki at the helm. Plus, they never got the cut from our last trip. They wouldn't leave without getting paid. Describe Yiki. She's beautiful, she is. Kisses like summer. From the first time I saw her, I wanted to eat her all up. Not helpful. Okay. She's raven-haired and has a precious band on her arm that I gave her. Always wears it. I'll find them and return as soon as I can. I should tell Yellen about Yiki. मैं already कर लिया था ये. I found your ship. And? Come on now, where are they? Where's my Yiki? I really don't know how to tell you this. Oh, for fuck's sake. Zeus could have impregnated the whole of Athens in the time it takes you to say anything. Where are they? They're dead, all right? And your ship's gone too. Oh, my Yiki. All I found is her armband. Yiki. Suppose I'm not much of a captain now. Can't be a captain without a ship. I'd best be on my way. You do that, Mistios. You may not be the cause, but nonetheless, you're the bringer of ill fate. If I never see you or that fucking oracle again, I'll count my blessings. इतनी बकवास के लिए इसको सिर्फ मौत मिलनी चाहिए, पता है? ये इसलिए काम आता है, पता है? You can take all the required एलिपिनोर किधर गया? एरिया में जाने का, किधर भी जाने का, मतलब डूबा हुआ कोई शिप विप रहता है, वो सब उठाने का, चले जाने का उधर से, एंड सीधा इधर पहुंच जाने का. स्टार्ट द. ये क्या अलग पत्थर है क्या चढ़ने के लिए? Blessings upon you, Mistios. Thank you. भाई ये कौन सा मेरा ये बीसीजिंग बैंडिट्स करके कौन सा मिशन ऑन कर लिया था मैंने. इसे पता है मल्टीपल कर सकते हो एक साथ में, इससे लेवल भी बहुत फटाक से मिलता है, फटाक से. सो ऑब्वियसली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल जस्ट गो एंड चेक द एबिलिटीज. ओके, आर्मर इज मच नीडेड. मैं आर्मर 3 कर लेता हूँ, छोड़ो बाकी की देखेंगे क्या करना है. मेरे को एक चीज़ और देखने का था. इफ़ आई हैव द सेकेंडरी वेपन, ठीक है. Where is this guy? Where is Pokis? Καταδικαστέοι είναι η ηθική αξία των τραγουδοποιών. कौन इतना ब्रिज तक जाएगा? सीधा से चढ़ जाने का इधर. स्नेक.
क्या कतामना पोलियो क्या बोल रहा है? पोलियो डोज दे रहा है। Ah, Misthios. How was Megaris? एकदम मजे में। The wolf is dead. Excellent. The full amount as promised. You expected me to haggle? Come now, Cassandra. It isn't every day I have someone kill their own father. But he wasn't your real father, was he? Why did you send me to kill Nikolaos? Because I knew you could. Oh, why him? Because he was brilliant. He would have taken Athens in a month, 2 at most. And Stentor doesn't have the wolf's genius. You wanted to save Athens? There's no profit in a quick war. I know. It's a lot to take in all at once. Come. Tell me, Misthios, did you learn anything worthwhile in your dealings with the wolf? I'm done talking. I should kill you where you stand. Temper. And they said you'd be different. But blood is blood, I suppose. They? What blood? You really are more brawn than brains, aren't you? A shame. I could have used you for more of my errands. Malaka! You think you can play with me? I'll cut out your tongue. So disappointing. I'll cut you down! Go away, stupid bird! Put it down! Pinor snuck away like a coward. I should investigate his house. A letter to Elpinor. Phoebe, you led him right to me. Phoebe इतनी येड़ी है ना मतलब. Krithos, you are right about the Cephalonian peasant girl. She led me right to the Misthios near the ancient ruins of Cranioi, जो भी था. You did good work tracking them down. Now you get them both. Trust me. Did I ever tell you I was fan of theater? And for you, find your payments in Focus. Signed, Elpinor. Elpinor's looking for a woman. I wonder who he wants in his slimy grasp now. Elpinor is in regard to a search for the woman. If anyone would know her whereabouts, it would be that crazy priestess at the Asclepios sanctuary. I'd go myself, but she terrifies me. Yours, Antonide. This is a ship manifest. Elpinor's selling weapons to both Athens and Sparta. He wants this war to go on forever. I have met some treacherous people. None of them compare to Elpinor. I'm going to look under every rock, in every shadow until I find and kill this vile serpent. This area will be well defended. Find Elpinor is still in Focus. Okay, let me see. ये क्या है? Photios pre-retirement. This is obviously Barnabas's mission. Barnabas जो भी है. कहाँ पे होगा गांडू?
इसमें ये ही मुझे कंटाल आता है, पता है, लेवल्स बढ़ जाते हैं जस्ट इन द नेम ऑफ रिवॉर्ड्स। लाइक क्या है? लीडर साहब से थोड़ा इजी स्पॉट एक्चुअली, बहुत ही भरे पड़े रहते हैं यहाँ पे। बेचारा वो ढूंढ रहा है कहाँ पे गया, ढूंढता रहे अभी। बर्न वॉर सप्लाइज, लूट ट्रेजर, 3 ट्रेजर थे यहाँ पे। भाई कौन सा वाला कर लिया भाई मैंने? 15,000 XP मिला मुझे, चिल्ड्रंस ऑफ एथेंस। क्या लाओ, दो कचरा दो ना। वेयर आर चेस्ट? तो एक यहाँ पर है, दूसरी चेस्ट कहाँ पर है? There's one just right side of me. अरे किधर थी यार ये चेस्ट? इसमें नहीं दिखती, पता है कभी कभी। एक किधर है, एक अच्छा यहाँ पर है ऊपर। विक्टर्स हेलमेट, मैं क्या करूँ उसका? ओके, द लास्ट वॉर सप्लाई इज देयर डाउन। बाकी के एनिमीज को मारना ज़रूरी नहीं है, नॉट एट ऑल मैंडेटरी। अरे किधर रे लेवल 20 का ना? अजीब अजीब फ्लोर पे रखा हुआ रहता है इन्होंने, पता है सब। हो गया लीडर हाउस कंप्लीट। लीडर कहाँ पे गधा? बेसिकली लीडर बाहर निकल के आता है, पता है, व्हेन यू एक्चुअली किल हिम और लाइक टेक हिज सप्लाइज डाउन, तो कहीं ना कहीं वो आ जाता है बाहर। डोंट टेल मी कि एल्पिनोर इज द लीडर। ये रहा लीडर यहाँ पे। अनडिस्कवर्ड लीडर कौन है ये? देखते चलो इसको, साले को जाके टपका डालते हैं, खत्म करते इसको।
कहाँ पर है बाउंटी हंटर? 18 लेवल का है वो कुत्ता। अच्छा ना, ऐसा नहीं है खाली कि इन्होंने असैसिन्स क्रीड मिराज में डाला है, ये असैसिन्स क्रीड ओडिसी में भी था कि लोग अपने को अगर मर्डर कर देखते तो चिल्लाते, तो मतलब उससे अपना जो मर्सिनरी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अपने तरफ। ये भी बढ़िया है भाई। मर्सिनरी क्या एग्जैक्टली ट्रैक करता है पता है? टॉप सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अभी और 15,000 एक्सपी मिल गया मुझे। 20 लेवल का हो गया, मैं बड़ा हो गया। उसी बहाने एक तीर मार दिया जाए हवा में। अरे अभी तो वेपन्स भी चाहिए मुझे इतने, मेरे पास लेवल 20 का कोई वेपन ही नहीं है। ये हुड क्या है ये वाला? चंगी लग रही है, अच्छा है नहीं इसका ये, लेकिन ये एपिक हेलमेट अच्छा है एक्चुअली अपने लिए। सो नाउ व्हाट डू वी हैव? असाइन दिस एबिलिटी नहीं, ये सब शॉर्ट्स में नहीं दिखता। रैपिड फायर ओके, यूजलेस लग रहा है। दिस इज समथिंग गुड। अब मैं क्या घोड़ा लेके घूमता रहा हूँ? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसको कैसे मारा था। लाइक एल्पिनो को कैसे ढूंढा था मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी इतने सारे मिशन यहाँ एक्टिवेट हो चुके हैं ना कि मैंने समझ नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, विल गो टू दिस प्लेस। शुड आई लेट्स स्टार्ट द मिशन ओनली। वहाँ पे है वो ओरेकल से मिलने का एक मिशन है, तो वो कंप्लीट करते हैं। आई थिंक उसके बाद एल्पिनोर शायद बाहर आता है अपने आप कहीं ना कहीं से, कुछ तो है। इस गेम में पता क्या होता है कभी कभी, व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम, लाइक अभी इसके बाद जो कल्ट ऑफ कॉस्मोस का पूरा मिशन आएगा, उसके बाद दे विल रिवील द मेंबर्स, कल्ट मेंबर्स। तो उसमें कल्ट मेंबर्स का ट्री होता है, सो यू जस्ट नीड टू ट्रैक देम। इधर वेज कभी कभी ऐसा होता है कि वो चलते फिरते होते हैं और अपन किसी को मार दिया एंड देन यू कम टू नो दैट अरे भाई ये तो कल्ट का मेंबर था। तुमको शार्ड्स मिल जाते एक तो पहले तो। Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinor? We can talk later in private. Who's this? Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You weren't lying. It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned you. Malaka. Varnavas, use your head. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did...
You know my spear just by looking at it? You're more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here on behalf of a man in Athens. A very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, Barnabas. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war? I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell you? I asked her to show the path to the war's end. She said, spring should not wish for winter, as it brings death with it. Such wisdom. I don't understand a word of it, but that's why she's in there and we're out here. I know a threat when I hear one. You were on Kefalonia for too long. This line is ridiculous. Are there always this many people to see the Pythia? These are more than just people. Every city sends a Fiori, or sacred ambassadors to seek guidance on behalf of their people. The Pythia not only shapes the destinies of individuals, but of the entire Greek world. Imagine what power one would have if they controlled what came out of her mouth. Apollo controls this. Of course he does. Delphi is nothing, like they say. Has it always been like this? No. This was once an open and welcoming place. But war changes things. People seek out the Pythia for more political reasons. Prophecies in times of war often stir violent emotions. It's wise to keep your blades sheathed. Drawing blood in Delphi is considered an insult to Apollo. Punishment is severe. I have my own questions for the Pythia. But this line... I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than a field of grass! I didn't come here to start trouble. Trouble? Just walk in! Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? Malaka. I'm here to see the Pythia. Only those chosen by the light of Apollo may enter. How does one get chosen? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? डर गया भाई. The Oracle. ये वही ढोंगी लोग रहते हैं मतलब. Enter into the light of Apollo, the light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. I lost my mother when I was young. I have to find her. Where is she? It's you! From the visions! The child on the mountain! How could you know that? You need to leave. Now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. While in Kausos, you didn't cower in the face of the priest. A child and her family still live thanks to you. But how? No one can hide from the light. Please. I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain. The cult of Cosmos have eyes everywhere.
they will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken! The prophecy is yours! You never answered my question! The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers! लेकिन इनको इतना सारा कैसे पता है मतलब इसके बारे में? You're still here. Where's Varnavas? He's gone back to your ship. You don't look happy with your prophecy. She knew who I was. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain. I'm telling you. She knew who I was, what I'd done. She tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? I'd heard whispers. A cult unlike any other coming to Delphi. But I paid them no mind. And the Pythia seemed afraid of them. The guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia, this is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. You know more about the Pythia than I do. Where would she be? When she's not in the Temple of Apollo, she's at her home in the Hora of Delphi. I'll find where the Pythia lives, and I will get answers. Cassandra, don't forget. Brute force is useless when finesse is required. ये वाला सीक्वेंस एक्चुअली मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही है. ये क्या है? Ah, Mistios. Well, aren't you a sight to my aged eyes? Young, energetic. Perhaps I should just pay for your body instead of your help. Watch yourself. That's not my line of work. Oh, forgive me. I'm amazed the gods would send me someone so well-suited to help me, but who is also so appealing to me physically. I'm glad to hear it. Korigos, my husband, is having some difficulties keeping up with my hunger for pleasure. I imagine any man would. Oh, I have many lovers, but he's my soulmate. When we're together, it's indescribable. Then don't describe it. When we were younger, we would run into the moonlit forest, shed our clothes, and pleasure each other until sunrise. Our howls of ecstasy would echo throughout the valleys. भेड़िए थे क्या भाई? By the gods, woman! I said spare me the details. I wasn't expecting a tough-looking mercenary to be so squeamish about a little fun. What does this have to do with me? I've learned of a powerful elixir, which if consumed will give someone the vigor and stamina of Eros. If you can gather me the ingredients, I can make it for my husband. All right, I'll find the ingredients. If you promise to keep your nocturnal activities to yourself. I have some drachmi, and Koragos has more. If you can bring me some bear scrotum and a deer tongue, I can make the elixir. Oh, is that all you need? Don't worry, I'll reward you well. I'm sure Koragos will be thankful also. I'll be back with the ingredients soon. Do I have that? Please bring back the ingredients. I'll be back with the ingredients soon. अच्छा मतलब अपने को जाके वो ट्रैक करना ही पड़ेगा. So I'm not tracking obviously this shitty quests. ये तो खाली अपन ने quest on कर ली है. I know डेल्फी का घर किधर है. वो डेल्फी हाउस ऑफ पिथिया. मैंने वहाँ से ट्रेजर्स निकाल लिए तो मुझे पता है वो एग्जैक्टली कहाँ जाना है. इसलिए मैंने हीरो तो उसको कुछ पूछा ही नहीं. आई एम लाइक व्हाई टू वेस्ट टाइम व्हेन आई नो इट. अरे फिर ये मर्सिनरी घूम रहा है इधर कमीना. और ये कौन है नया वाला? 19 लेवल का
कैरिल द हीरोइक पोएट। अरे तू पोएट कैसा भागता, कैसा भाग रहा है देखो वो। अरे भाई साहब नहीं, उसका वो भी जानवर भी नहीं मर रहा है। 19 लेवल का है, मैं 20 लेवल का हूँ, क्या मजाक है। अरे ये कुछ भी करते भाई लोग। Get it out! Get it out! ये लेपर्ड भी मार रहा है इधर फालतू का मेरे को इधर। हक दिए भैया। वाह। How did you do that? It's a sorcery. Somebody help! गया। ये सबसे घटिया और सबसे बकवास सिस्टम है इस गेम का, दैट दे गिव यू अ लेवल। लाइक 20 लेवल का मैं हो चुका हूँ, बट साला वो जो मर्सिनरी है वो 19 लेवल का था, फिर भी भाई वो इतना उसके पास रेजिलियंस था, क्या बात मत पूछो। और ऊपर से उसका लेपर्ड अलग से पप्पी दे रहा था मुझे। ये बकवास चीज़ है पता, लेकिन हाँ उन्होंने वो करने के लिए दिया है, यू कैन ट्वीक इट। बट फिर बोलते कि रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। आई एम लाइक ओके हटिए भैया, हमको जाने का है पीथिया के पास। मतलब ये खाली इतना है कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम इन दिस गेम तो भाई तुमको बहुत सारे घंटे चाहिए इस घंटे टाइप की गेम को खेलने के लिए। इतने सारे मिशंस है यहाँ पर, एंड उसमें ही ये जो उनके The Oracle is hiding inside. Finally get some answers. वहाँ पे भी एक मर्सिनरी घूम रहा है फुकट का। लाइक क्यों घूम रहा है वो उसी को मालूम, बट घूम रहा है। हम भी क्या कर सकते हैं उसके बारे में। क्या गार्ड्स नहीं है? जीनी ऑफ तारतारोस। मैंने यहाँ से अपना जो भी लेना था वो तो ले ही लिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको आके पहले मार चुका हूँ, बट अभी ये बंदे जो है वो समझ नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ। A lot of protection for the Pythia. भाई उसको भनक लग गई लगता है वो गधे को। वैसे बाय द वे मैं अंदर जा रहा हूँ, who cares? भाई क्या घुसी है यार ऐसे। No! Guards! I'm not here to hurt you. I just want answers. The Pythia is a sacred vessel of the gods. People travel the world for my answers. But none of them would dare break into my home. Apollo's wrath will be cruel and swift. Guards! Enough with your lies. Tell me what I want to know. I can't breathe. If you raise your voice, if you tell a lie, I will cut your throat. And feed it to the goats. I'm dead already. They'll find out you were here. And they'll kill me for it. Who? This cult of Cosmos? Speak! Yes, the cult wants you dead. They know you're here. What is this cult of Cosmos?
They are the eyes that see, but go unseen. Enough with the riddles. I want names. I don't know. I swear. They hide behind masks and shrouds. Why would you work for the cult? I have no choice. So, all those prophecies from the gods, all those people, you're paid to deceive them all? Most want to know about love or death. I tell them what they want to hear. But when people want to know about war or politics, I'm paid very well to tell them what the cult wants them to hear. You said you saw me in your visions. What did you see? There is an artifact under the Temple of Apollo. It reveals what only the gods should know. You called me the child on the mountain. The cult hunts a Spartan child who survived a terrible fall from Mount Aietos. The artifact revealed that child to be you. You have an opportunity to do the right thing. Tell me where to find the cult. Tell me where they are, or we'll go find them together. Beneath the Temple of Apollo there is an ancient chamber. I think they meet there. But without one of their cloaks and masks, you won't make it more than 2 steps inside. Where can I find one of these cloaks and masks? There is a man. He visits me from time to time, makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers drachmi for my troubles. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. Elpinor? He's with the cult? I can't be sure, but if he is, he would definitely have what you require. Any idea where I can find him? There is a fort just south of the Valley of the Nymph. He's been known to conduct business there. You've been helpful. Now get out of my house! Bichari. Pitia. So much for using finesse. I should tell Herodotus what the Pythia told me about the cult. Maybe he'll have some insight. लड़ना ही क्यों है अपने को, सीधा सीधा निकल जाना है बस. हेरोडोटस. वहाँ भालू से लड़ रहा है वो. Well, what did the Pythia tell you? The cult of Cosmos is hunting me. But I'm going to hunt them first. She told me they meet in a secret chamber under the Temple of Apollo. So it's all true. If the cult has done anything, it's fooled this old man. I can't get in without a mask and cloak. It's how the cultists identify each other. The Temple of Apollo is by the cave of Yea. Simple enough to find. But a cultist's mask and cloak? How will you accomplish that? The Pythia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now, I'm going to kill Elpinor. Malakas liar. Onward! अरे भाई ये सुअर भी बहुत गंदा मारते पता है. I don't want to be the शिकार of the sewers. Valley of the Snake. Dome of Titios. Valley of the Nymph बोला उसने. वो किधर है? Valley of the Snake किधर? Valley of the Nymph किधर है? rather than riding इधर ही चला जाता. इसका स्टोरी बहुत सही लगता है मुझे. साइड मिशंस एंड लेवल सिस्टम थोड़ा अजीब है बट बाकी स्टोरी इज गुड. या एंड लेवल सिस्टम तो टट्टी और टाइम वेस्ट ही है इस गेम में 100% भाई. Nikolaos warned me of snakes in the grass, but I wasn't expecting this.
trouble if I'm spotted here. He's in the southeastern part of the valley of the nymph. He must be in the Pharsalos fort. Pharsalos fort तो पीछे लग रहा है मेरे को, एक फोर्ट है. चलो जाते हैं. Pharsalos fort is in southeastern part. अभी ये कौन सा है? वेस्ट है. So this would be south east, नहीं साउथ वेस्ट हो गया. This is southeastern part of valley of the nymph. मजा कह रही है यार ये डेस्फीना फोर्ट है. There were two forts I think in this area. इधर पता नहीं. Elpenor is still in assassinate Elpenor. साला किधर है गांडू? Normally यहाँ पे लिखा हुआ रहता है if there is a valley of the nymph. यहाँ ये रहा valley of the nymph and this might be the Pharas. क्या नाम था? Pharsalos fort. Okay, so this is the nearby. आई थिंक बीच में मैंने उसको ये स्नेक टेम्पल में मार दिया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है इफ आई एम राइट और रॉन्ग, पता नहीं. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन क्रिएट योर ओन वे. इसमें ऐसा है कि मिशन से फॉलो करना है, मिशन से फॉलो करो, नहीं फॉलो करना है तो यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड एल्पिनोर एनीवे. अभी अपना मिशन पीछे की तरफ है ना, अपने को यहाँ कूदना नहीं है. कूदेंगे तो अपन नीचे चले जाएंगे एंड देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इन रीचिंग द एरिया. ये फोर्ट को भी मतलब ढूंढना इट्स अ बिग थिंग. रेड करना तो अलग ही बात है. There he is, hiding in plain sight. इसमें आधे माउंटेन रीजन्स बहुत बेकार है मतलब. अरे हाँ, अभी मेरी ये हेल्थ नहीं जा रही इतनी. नाइस. ये जंप लेवल अपने आप मिल जाता है. एक आई थिंक 20 लेवल पे दूसरा भी कोई तो था, एक मिनट देखना पड़ेगा. वी नीड टू चेक इन द इन्वेंटरी. एबिलिटीज नहीं, एबिलिटीज. लीप ऑफ फेथ नहीं. दिस इज रिक्रूट नहीं. Meditation, assassinate. Falling does not cause damage. Next upgrade, falling does not cause damage while falling. Press to smash the ground and stun nearby enemies. Leap of faith. Correct. हाँ, मतलब अभी कितने भी ऊपर से कूदूँ, I won't be dying there. लेटा पड़ा है, सो रहा है वहाँ पे जाके. कुतरेया. कुतरेया सो रहा है. Boy, why am I not surprised? Elpenor, you coward! Elpenor knew I would come for him. Used that imposter to lure me into a trap. Your plan failed, Elpenor. Soon you will join your imposter. मैं बोला ना, स्नेक टेम्पल में मारा था मैंने उसको पहले भी. I don't know what was wrong. Something's out there. Back to my ये वाला मेन वॉलिंग मार क्या जो बोलते हैं वो है, इसको मारना पड़ेगा.
अबे 18 लेवल का है, मैं 20 लेवल का हूँ, फिर भी मेरे को मार रहा है। सोचो ये चीज़। देखिए क्या गेम है ना, मेरे को ये अभी तक समझ में नहीं आया। इसका लेवल सिस्टम इतना घटिया, इतना टट्टी क्यों बना के रखा है? Just give up! अरे वाह, उड़ा हवा में। मतलब मैं 21 लेवल का, फिर भी 18 लेवल वाले मेरी आगे पप्पी लेके जा रहे। वाह भाई वाह। ओवरऑल ग्राफिक्स में, लुक्स में ये गेम बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी, बट व्हेन इट केम टू द गेम प्ले मजबूत हगा था, मजबूत। एक मतलब एक तो लेवल सिस्टम ये इसमें क्या बोलते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट किया था उन्होंने ये फालतूगिरी करना, एंड विच वाज लिटरली फालतू। मतलब कैसा है पता है, लाइक अपने ओरिजिन में तो अपने पास शील्ड भी होती है ना, इन दिस गेम वी डोंट हैव शील्ड, बट वो शील्ड में अगर समझ लो एनिमी अपने से ज़्यादा पावरफुल है तो वो शील्ड भी ब्रेक कर देगा अपना डिफेंस गया फिर वहाँ पे। मतलब कुछ ज़्यादा ही फालतूगिरी था वो तो। मतलब क्यों इतना यूजलेस रखा था ये समझ में नहीं आया। भाई क्या कर रही है? अरे यार ये गलती से आर दब गया। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। पोपट हो गया। किल कैप्टन, 2 कैप्टन है यहाँ पे लुक पे। देखो मेरा 18 लेवल है, 3 लेवल उससे मैं ज़्यादा हूँ, मतलब सॉरी उसका 18 लेवल है, मैं 3 लेवल उससे ज़्यादा हूँ, एंड देन स्टिल दिस गाय इज लाइक, स्टिल दिस गाय वोंट बी गेटिंग दैट डैमेज। देखा डैमेज जा ही नहीं रहा उसको। बस ये टट्टी से गेयर्स के लिए मुझे इनको मारना पड़ता है। व्हाट द फक। लाश उठा के लेके आ रहा है बेचारा। वाह बच गया वो। कितना शाना था, उसको पता है कहाँ से एरो आ रहा है। ये वेपन डैमेज तो लाइक इसमें मजाक ही करके रखा हुआ है। मेन अपना ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि वी जस्ट नीड टू टेक द चेस्ट, दैट्स इट। I'll crush you. अभी सुअर मारेगा देखो उसको। सुअर 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 ऑन योर बैक डूड, सुअर ऑन योर बैक। हो गया, सुअर ने खा गया। नॉइस नॉइस। क्या वेस्ट है ना डैमेज लुक पे, क्या वेस्ट है। 3 लेवल ज़्यादा हो फिर भी वेस्ट है। वाह इनको 2-2 मिनट में रेज आता रहता है भाई। संडास करने जाओ तुम। भाई वो सुअर लोग जो मार रहा ना उसको, भाई मजा आ गया मुझे। भाई वो भी जिंदा है फिर भी, लाइक क्या यूजलेसनेस है वो। मार साले को, मार मार। काट गया रे सुअर, काट गया उसको। पप्पी दे दी सुअर।
और कौन मार रहा है? अच्छा वो दोनों है एंगेज्ड बैटल में, छोड़ो अभी अपने को वो एक सिर्फ एक चेस्ट चाहिए, उसके लिए अपन सीधा निकलेगा इधर से। निकलना कहाँ से? व्हाट द फक? वेपन में मुझे आई थिंक एनग्रेविंग वगैरह सब कराना पड़ेगा, मुझे सब लग रहा है। ये क्या है यार? अरे भाई मुझे बाहर निकलना है। दिस इज अ वे आउट। नहीं फिर से चढ़ के मैं क्या फोर्ट के अंदर से जाऊँ अभी? चलो काम पे लगा देते यार हर जगह पे। अब मर्सिनरी मुझे ना देख ले तो अच्छा है, और देख ले तो मैं भाग जाऊंगा, वैसे भी कुछ करूंगा नहीं उसके साथ। ये वेस्ट ऑफ टाइम बैटल्स है इसमें। ये भाई एक सबसे बेस्ट दे दिया है, पता उन्होंने, जहाँ से तुमको कूदना है वहाँ से तुम कूदो। स्नेक टेम्पल तो इधर था ना, ये रहा। लेट्स गो फास्टर। आई गेस मुझे अभी सबसे अच्छा ये करना पड़ेगा दैट आई नीड टू फाइंड सम मटेरियल्स फॉर माय वेपन्स, और एनग्रेव करा के वेपन्स को आई जस्ट नीड टू अपग्रेड टू माय लेवल आई गेस, तभी जाके डैमेज बढ़ेगा मेरा। आई थिंक वो वेपन का डैमेज कम था। लाइक यार ये सॉर्ट ऑफ टट्टी लगता है मुझे, ये क्यों रखा है गेम में इन्होंने सालों ने, पता नहीं मुझे। या क्लोज टू अ टारगेट। इकारोस Icaros. Okay, it's not necessary to kill these bastards क्योंकि इस स्नेक टेम्पल में ऑलरेडी कर चुका हूँ। I just need to check if I have a weapon which is more powerful। ये 16 लेवल का वेपन था इसीलिए नहीं लग रहा था उसको। ये 19 लेवल का भी कुछ झाटा उखाड़ेगा, बट ठीक है चलता है। 16 लेवल का लास्ट ब्रेसर्स नहीं, 20 लेवल का ब्रेसर्स है मेरे पास। हेलमेट भी चेंज करना पड़ेगा यार। ये मतलब थोड़ा बकवास सा लगता है मुझे कि वाई शुड आई चेंज दीज आर्मर्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ डैमेज एंड आर्मर अगेन। लाइक 17 लेवल नहीं 19 का है ना, 12 आर्मर दे रहा है, ठीक है। 16 लेवल का, 17 लेवल का, 18 लेवल का, ओके फाइन। मुझे बहुत सारी चीज़ों को एनग्रेव कराना पड़ेगा लग रहा है फॉर श्योर मैन। 18 लेवल की वो है मेरे पास। चलो ठीक है अभी देखते हैं। क्या घटिया हेलमेट लग रहा है बट ओके। हाँ और एक चीज़ भूल गया मैं, एबिलिटीज़। योर नॉलेज फॉर ऑफ एनिमीज अनडिनाइबल पॉइजन बिल्डअप इंक्रीजेस बाय दिस। बिल्डअप इंक्रीज का फायर इज़ बेस्ट क्योंकि वो अपना जो थर्ड वाला जो ये ब्लास्ट टाइप होता है ना एरिया वाला, उससे सब पे फायर बिल्डअप हो जाता है। कैन आई किल दिस? चलो इधर भी मर्सिनरी आना बाकी रह गया था ना, मतलब क्या मस्त है लोग यार। ये कल्टिस्ट गार्डन को मार के मतलब नहीं है, स्नेक टेम्पल मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया एरिया में। तो क्यों ये मर्सिनरी क्यों टपक जाते जगह पे अपने यार? मतलब तुमको कहाँ से मालूम पड़ता है कि मैं यहीं पे हूँ? प्रॉक्सिनोस द स्फिंक्स। देखो भाई इसका आर्मर देखो, वाह। स्टेल्थ अटैक होल्ड, उसका हेल्थ देखो कितना जाएगा खाली। अरे भाई 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 भाई, उसका कुत्ता कहाँ पे हो? उसको पहले मारूंगा मैं। उसमें एनिमल तो होगा उसके साथ 100%। ये सब छोटे मोटे लोग नहीं है। आला मालूम पड़ा फिर उसका वो भेड़िया कुत्ता को आके दिमाग पे आके बैठ गया मेरे। और दिस इज़ द ओनली वे टू किल देम, तो चलेगा मुझे। तो पहले इधर की सेना ख़त्म करो,
ओके डूड, अब वो साइड जा रहा है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है कुतरे से। ओके ये डन, क्योंकि आफ्टर ऑल मर्सिनरी जो है वो मेरे केव के अंदर जा रहा है कमीना, एंड ही इज एग्जैक्टली गोइंग एट द स्पॉट वेयर आई हैव टू बी। ओके ये जो भाई कल्ट ऑफ कॉस्मोस के वो एनफोर्सर टाइप की पब्लिक होती है वो जल्दी मरती नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग दोज बार्स ऑफ एड्रेनलिन जो मुझे चाहिए बजाने के लिए इनको। वो मर्सिनरी एग्जैक्ट स्पॉट पे था वहाँ से। ओके ही इज गेटिंग आउट। भाई वो एग्जैक्ट वहीं जाके फिर भी खड़ा हुआ है। अरे कहाँ है दिमाग की खा रहा है भाई, जाना। क्योंकि फाइटिंग एल्पिनोर वुड बी मच मोर इजियर देन फाइटिंग दीज बास्टर्ड फॉर नो रीजन। वो देखो एग्जैक्ट लोकेशन पे घूमता है। भाई कितना लूजर है ये बंदा, एग्जैक्ट लोकेशन पे घूम रहा है। चल चुप। क्या इसको मार दूं क्या मैं? मेरी गट फीलिंग बोल रही है मारने के लिए, लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर आके कुछ वो ना कर दे यार। I can smell that Malakas's stench. वाह भाई वाह, क्या डैमेज दिया उसने। इतना बर्निंग डैमेज खाने के बाद भी बंदे का हेल्थ नहीं जा रहा है, ये कमाल है गेम। ज़्यादा मैं फायर में रुका तो मेरे पे फायर डैमेज लग रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? क्या एक ही शॉट मारा उसको? Don't take it personally, Mistios. Your mother's the one we really Don't fight it. The cult always gets what it wants. We already have Venus. We'll find your mother and you'll be dead. Killing me is a mistake. Trusting you on Kefalonia was a mistake. I am the reason you left that island alive. The cult wanted you dead. What cult? Where are they? शार्ड। अभी इससे अपना स्पीयर का पावर बढ़ेगा फिर। That is why it is more important. Elpinor is like nothing I've ever seen. Might come in handy. क्या बोल रहा है भाई इसका? अब इसका फाइटिंग अजीब है, एकदम फालतू दिमाग में जाता है। नहीं लिटरली जाता है दिमाग में, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब या तो फिर मैं ये कल्ट ऑफ कॉस्मोस के मिशन के बाद शुड आई अपग्रेड माय वेपनरी। अभी ऐसा ही लग रहा है कि मुझे वेपनरी पहले अपग्रेड करनी चाहिए। ये गार्ड्स पता नहीं कहाँ से आ गए, पहले मैंने मार दिया था इनको। एंड हु केयर्स अबाउट देम नाउ। सो हेरोदोतोस कहाँ पर है? हेरोदोतोस ओके नाउ आई वुडंट बी टेकिंग एनी डैमेज। नाइस रे बाबा, मजा आ गया। इसका क्या बिगड़ा है? चल छपरी। Okay, so now Herodotos, where he is Herodotos? एक सेकंड। अगर वो अपने वो अंदर वाले एरिया में अगर सिटी लेवल पे है देन आई विल जस्ट डायरेक्टली गो बाय दिस। मगजमारी नहीं करने का अपने को।
एक तो इसमें सबसे घटिया सिस्टम कैसा रखा है पता है? स्टार्टिंग में उन्होंने जो ओरिजिन्स में, मैं जब ओरिजिन्स फर्स्ट टाइम खेला था तो मुझे आइडिया नहीं था, तो जब एक वुल्फ या फिर हाइना, उसमें आई थिंक हाइना होते हैं, तो उसके ऊपर वो स्कल का साइन आ रहा था दैट आई वोंट बी एबल टू किल देम। भाई उसने एक फटका मुझे मारा ना, मेरी शील्ड पूरी की पूरी, मेरा जो डिफेंस था वो टूट गया। और इसमें साले अथेनियन सोल्जर क्या ऐसे शील्ड ठोक के एकदम पूरा डिफेंस में रखते, मतलब अपने को यही नहीं दिया है, हीरोइज्म ही नहीं दिया है। Assassin's Creed को टेकिंग बैक टू द रूट्स वाज अ गुड प्लान, क्योंकि गाली खाने से बेटर था कि मिराज के अंदर वो लोग वो चीज़ें डाले जो एक्चुअली ज़रूरत है। They're not ones for subtlety, are they? So, this is it. Hidden chamber of the cultists. Here, all alone. I'm going inside. Keep my clothes for me? Best not to go in with your weapons either. I don't think they'll look too kindly on that. Okay. Let us go. How do I look? एकदम sexy. Terrifying. Good. Find me once you've found out the truth in there. Keep your wits about you. Try not to do anything rash. Me? Rash? Thought these ridiculous costumes were a good idea. You're late! Very late! It's a good thing Demos hasn't arrived yet. Sorry, it's my first time. A new recruit? Welcome, welcome! There's a lot of people here. All share our common mind. Good. We're here to evaluate the strides taken by the cult since the last meeting. We haven't met for some time. Where did they come from? The land and across the seas, we assemble as a community. Here, there is no war. There are no sides. You mentioned someone. Demos. Who is that? You'll learn his name very, very quickly. He's our leader. I'm sure he believes that, but no. He's our weapon. He's difficult, but he does important work for us. I don't envy his position one bit. I'll go talk to the others. Thank you. Yes, yes, before Demos comes. Who knows if you'll get a word in after that. You're not listening. I'm still not convinced. You. We need another opinion on this. Why split resources searching for a woman we can't find? If we narrow our focus, Athens will be ours. Immediate threats have to be destroyed. Pericles has to be destroyed. Not without the mother. We aren't strong enough without the mother. Don't let Demos hear that. If anything, we should be hunting the father. We know who the mother is. Looking for the father would be a waste of resources. What do you think? Hunt the champion's mother or his father? The mother. She's right. Get your priorities straight. Before you know it, Pericles will shore up his defenses and we will have lost our chance. Now, if you'll excuse me. I need much more information to identify who Just these cultists are. We need to look for the father. It's only blood right now, but who knows? Demos may ask for our hands next. Go on, go on. Make your offering.
We just have to keep our sights on what the bloodline will do for us. The bloodline? The mother, the father, the sister. You know, his kin. We need them. All of them. To use them? That information is not for Deimos, of course. You know how volatile he is. He could rip through us easily. I'll be sure to keep it to myself. As you should. Nor can he know we're about to capture his mother. And do what with her? I would lower my voice if I were you. Just know she will be put to good use, unless she's uncontrollable. You know where she is? No, but it won't be long until we do, I assure you. She's the cult's next target. Tell me about Deimos. He's shown us what we need to know. He's a machine, a weapon for the cult. Someone that unstable can't be trusted with such personal information. I have to go. To our great ambition. To ambition. The cult of Cosmos is after Deimos' mother. The cult of Cosmos is hunting Deimos' bloodline. Pull yourself together, Malaka! You're a fucking pig before slaughter! I'll do it, I swear. I'll kill him. Let me go. You like to watch, you sick fuck? You're not just going to watch, you're going to teach this little insolent shit a lesson! I don't want it. Well, you fucking have to want it, cause I say so. Take it! No, I won't do it. Give the coward another chance. Tiki owes you something, you lucky bastard! You get to keep your skin today! He would have killed me. He's insane. Thank you. Stay off his bad side. I will. But he's right. I'll go straight to Athens. I won't fail, ever again. I'm going to kill Phidias. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली. ये इसमें बहुत सारे प्लान्स है इस गेम में. एंड इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है वाइल डूइंग द मिशन अनवांटेडली अपन किसी को मार देते. देन ही बिकम्स द कल्ट लीडर या फिर कोई कल्ट का मेंबर होता है. उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं. यू कैन किल देम बाय फॉलोइंग अ मिशन ऑब्जेक्टिव, या फिर तुम उसको ऐसे ही जाके मार दो. इट्स योर चॉइस. फर्क कुछ नहीं पड़ता. यू विल बी गेटिंग योर लेवल्स ऑब्वियसली. अपने को लेवल से ही मतलब है भाई. Letters to and from the cult. Gods, they have a foothold in every part of the Greek world. We're in more danger than I thought. Strange. I feel something. Towards the pyramid. It's covered in shards like alpinos. Ah, you had the last piece. Now it is ready. Every time I see it, it calls to me and sings of power. Does it call to you like it calls to me? It does. It's impressive. Yes. Show your reverence. What we have now is everything. Ira has blessed me. My great warrior is leading our army to victory. Can you imagine the pride I feel?
Then you have a thing or two left to learn. I raised our champion to bring us to ultimate glory. Wait and see. ऋतिक रोशन Elpinor is dead. One of you is a traitor. The artifact will expose them. You! Everyone will be tested. You first. Go. You. Go. You. Who are you? Go! You! Get up here! The traitor is dead! ऋतिक तो लगता है वो अगर मूवी बना तो ऋतिक कुड भी एलेक्सियस। हाँ वैसे भी उसको ग्रीक गॉड बोलते हैं, पता है यहाँ पे उसका आवाज़ भी काफ़ी ऐसा, वो जो उसका जॉ लाइन है वगैरह लगता भी है। कुड एक्चुअली प्ले द रोल ऑफ एलेक्सियस और वो अच्छा करेगा वो उसमें। You're alive. They know me. My family. They want my mother dead. I see. It's worse than I thought. There's more. They have a weapon. What kind? A soldier. Stronger and more ferocious than any I've ever seen. Herodotus... It's my brother.
We need to get to Athens. Athens? We need to find my mother. My clothes. Spear. Of course. My spear! The cult of Cosmos called my brother Deimos. He used an artifact to see my memories. Cassandra, the man I serve, we must tell him what's happened before it's too late. You've heard the name Pericles before. Pericles is the king of the free people of Athens. King? Athens has no king. Pericles serves the people, not the other way around. Serves the people. You're right. He's not much of a king. Save your doubts. He is working to end this war. We all are. If there are forces colluding against him, he must be warned. We have to go. Okay. You weren't there, Herodotus. The cult controls everything. There's no stopping them. Which is why you cannot turn away. They want to destroy all of the Greek world with this war. I won't be some pawn in your scheme, Herodotus. Don't do it for me, then. Do it for your mother. If there is one place where we can find information about your mother, it is in Athens. How? Pericles surrounds himself with the brightest minds in Athens. Which is to say, anywhere. In Athens, you can fulfill your duty to your family. But before we can go, I need you to meet me at the Lion of Leonidas, at Thermopylae. Leonidas? Why? There's something I need to know. Something that may help us take down this cult, and save your mother. You've proven I can trust you, but let's make it quick, Herodotus. First, Thermopylae. Then we go to Athens. I'll make sure every single one of these cultists dies by my hands. Cult of Cosmos. From the cultist menu, use the clues to unveil cultists, mark them and eliminate the cult of Cosmos. With the clues you have found, unveil a cultist identity by accessing their detail page. Once they are unveiled, mark cultist on the map. Each time you eliminate a cultist, you gain clues to unveil more powerful cultists. The Chimera. Okay, she is ready to unveil. Wow. What's one life worth without 1,000 others behind it? ये तो मर गया, इसको तो आई थिंक मार दिया उसने, एलेक्सियोस ने। एल्पिनोर को दपन ने मारा था। Cosmos demands to know the secrets hiding in the hearts of men, so I simply cut them open. Slaves understand you better when you carve your rules into the backs of their heads. Who needs democracy when Thrakmi rules the world? The cult is nothing without me. Even the gods cower in my wake. Kneel or die. ओके, ये भी सारा आई थिंक अनवील करने के लिए रेडी है। मैंने आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस ले ली थी। The fight is only over when I am the last man left standing. तो ये सारे हैं, अपन जाके डायरेक्टली मार सकते हैं उनको। whenever we Chaos is our greatest strength. बीलोस, बेलोस जो भी है। We rule with chaos and destroy those who oppose us.
इनको हंट करने का अलग ही मजा है, पता है? I spent 20 years at sea, only to realize the cult was my home. Okay, so I think we have unveiled the ones for whose we had the information. अभी अपने पास क्या है वैसे इन्वेंट्री में? क्या है अपने को? बहुत सारा वेपन्स जो है वो मुझे मॉडिफाई कराना है, लेकिन इसमें मुझे ये शार्ड्स वगैरह बहुत कुछ लगने वाला है. राइट नाउ आई हैव द 21 लेवल का बो. अभी इसमें आर्मर वार्मर कुछ है क्या विच इज़ अबाउट 20 लेवल? कुछ नहीं है साला. तो लेट्स गो टू थर्मोपिले. बीस लेवल का है झंडू. कभी कभी इनको मारने में भी अपने को जो अपनी चीज़ है वो मिल जाती है. क्या फालतूगिरी था, मतलब ये क्यों मार रही थी मुझे समझ में नहीं आया. मुझे वैसे गेम में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है. अभी अपने को कहाँ जाना था? मेन ओडिसी थर्मोपिले. टॉक टू हेरोडोटस. हॉट गेट ऑफ थर्मोपिले. गरम गरम दरवाज़ा. अपन अभी ऊपर से कूद सकते हैं बिकॉज वी आर लेवल 21 राइट नाउ. पहले मुझे याद है मैंने गेम को बहुत फटाफट रश किया था विद द स्टोरी. तो मुझे पता ही एथेंस वाला जो मिशन था पेरिक्लिस वाला, आई वाज लाइक मेयरली लेवल 15 और 14 जब मैं वहाँ पहुँचा था. एंड दैट वाज अ पेनफुल थिंग टू डू. लेकिन अपना घोड़ा मर जाएगा इफ़ वी जंप फ्रॉम अबाउट. अपना घोड़ा मर जाएगा अगर ऐसा कूदेंगे तो. घोड़ा नहीं जितना रहता, खाली अपन ही जो है जो ये हाइट को ये कर सकते, फेस कर सकता. अदरवाइज अपना घोड़ा ऐसे ही मर जाएगा. 300 मीटर पे अभी भी 300 मीटर. ओके वांट टू ट्राई. वेट बट बिफोर ट्राइंग मेरे को ये लग रहा है कि साला घोड़ा अपने को ना मार दे. सो इट्स बेटर टू सेव. घोड़े का भरोसा नहीं ना भाई, वो तो घोड़ा है आफ्टर ऑल. इसकी हेल्थ यहाँ पे नहीं गई एटलीस्ट.
कितनी बार गिरेगा रे? ये गया अभी, फोबोस गया, फोबोस गया, फोबोस भाई फोबोस ओके अपने पास तो है पावर तो। अरे पानी भी था यहाँ पे, मुझे पानी में नहीं, मुझे जंप करना है। I can't believe I'm finally seeing where history was made. Thermopylae. They say you can't walk this battlefield without getting blood on your toes. This is where Leonidas was laid to rest. If you close your eyes, you can hear them. Their final war cries, before every last one of those brave Spartans perished. Their voices were silenced that day, but their story will be sung for an eternity. You didn't bring me here to talk about dead Spartans. What's on your mind, Herodotus? The Battle of Thermopylae still echoes in our hearts, but to stand here is to feel it in your bones. There's nothing here but ghosts. My concerns are with the living. Hold out your spear. My spear? What for? I need to know something. क्या लास्ट एंड हुआ हुआ है यार, ये खतरनाक वाला। लाइक आई कैन जस्ट इमेजिन दैट। फिल्म्स भी देखी है अपन ने इसकी, एंड क्या खतरनाक हुआ हुआ है यार ये। भाई वो कितना कुछ खा चुका है फिर भी जिंदा था, एंड दिस गाय जस्ट पोक्ड हिम विद द स्पीयर और मर गया वो। Herodotus! I'm fine. I'm fine. The stories are true. That is the spear of Leonidas. The hero's blade. Where were Sparta's allies? The Spartans weren't alone in facing Xerxes and his hordes. Many from across the Greek world were armed and ready to fight alongside Leonidas and his 300. But when the mighty king looked into their eyes and saw fear, he sent them home. That sounds like madness, not bravery. It was foretold by the Pythia that Sparta would lose either its freedom or its king to the Persians. Leonidas made his choice. What happened to Leonidas after the battle? Xerxes was famous for honoring warriors who fought valiantly against the Persians. But Leonidas infuriated him so much, he cut off his head and impaled it on a pike. A bloody battle ensued.
and his remains were reclaimed by the Spartans and buried here. Now, however, he rests where he belongs. In Sparta. What happened to the traitor, Ephialtes? King Xerxes paid him well, but treachery breeds treachery. A contract was put on his head, and he died as he lived. A coward. You knew this would happen. I didn't know, but I did suspect. There is a place I'd convinced myself was a dream. Until now. A peculiar structure on the island of Andros. Mysterious shapes carved in stone. Like nothing I've ever seen. You want to sail to Andros so you can show me shapes? In my travels, I heard whispers of an ancient civilization. A people who came before. Your spear and that place are connected. You mentioned a people that came before. Who were they? They were not gods, but they lived far longer than any mortal, and were far more intelligent. I've seen carvings in caves, strange symbols that suggest it was this ancient civilization that created humankind, and provided them with fire. But Zeus blamed Prometheus. Yes. Well, perhaps his eagle has been feasting on the wrong liver. The spear awakened to you, Herodotus. I trust you. You understand. I will do everything in my power to help you find your mother. I promise. But first, we must sail to the island of Andros. I'll meet you at my ship. Welcome aboard the Adrestia, Herodotus. Will you be traveling with us? Only for a short trip. I have business to attend to in Athens. Herodotus is helping me find my mother. Seeking help from the gods has put Herodotus on your path, just like they put you on mine. They work in ways beyond our comprehension, and all we can do is follow their lead. You could be right. Herodotus and I share enemies too. Like in Pinor? He was part of a very powerful group called the Cult of Cosmos that controls the Greek world through the Oracle. Control the Oracle? Impossible! Apollo would not allow that! Now they're looking for my mother. I need to find her before they do. And I believe they will hurt others who oppose their views along the way. By Hermes! The Oracle lost to corruption, and now it's a cult? Do we know who leads them? I don't know for sure, but I think it might be my brother. Your brother? By Zeus, your life is complicated! Tell me. But don't you worry! This cult of Cosmos now has 3 new enemies, and one of them fights like Athena and shits thunder like Zeus! We'll bring the wrath of the gods down upon them! Is he always this